get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know is when we leaving. वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका ASUS प्रेजेंट्स ROG शोडाउन सीरीज में। आज हम लोग आ चुके हैं वैलोरेंट लीग के सेमीफाइनल्स 2 में और मैं हूं मनस्वी, मेरे साथ है औरो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट डे 2? I'm really excited and thank you for the introduction and warm welcome. I think जनता तैयार है। कल हम लोगों ने सेमीफिनाले डे नंबर 1 देखा था और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस देखे थे एंड आई गेस हम लोगों में से बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि शायद एक 2-0 के स्कोर के साथ ही खत्म हो जाएगा, बट नहीं, हमें 3 मैप देखने का मौका मिला था। दोनों टीमों ने कांटे की टक्कर दी थी एंड सब ने एक्चुअली अपने-अपने पिक किए गए मैप पे हार फेस किया था अनटिल एंड अनलेस हम लोग डिसाइडर पे गए। आज भी कुछ ऐसा ही हो, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे एंड ऑफ कोर्स आज भी कुछ अमेजिंग प्लेयर्स एंड 2 अमेजिंग टीम्स आपको खेलते देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, लेट्स हैव अ लुक एट द टीम्स दैट आर एक्चुअली प्लेइंग टुडे। एक्चुअली आई थिंक पहले तो इस मौके का फायदा उठाना चाहूंगा मनस से बिफोर वी मूव ऑन विद द प्रोसीडिंग्स और टीम्स पर हम जाए, टीम्स कौन से खेल रहे हैं उस पर जाए कि एसुस ने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म ले किया है अलॉन्ग विद इंटेल, ये आरजी शोडाउन सीरीज प्लेयर्स को मौके की तलाश होती है। आई थिंक कल भी हम लोगों ने इस पर बात की थी, आज भी मैं यही चीज पर या फिर यही टॉपिक पे थोड़ा एनलाइटमेंट डालना चाहूंगा कि प्लेयर्स को मौके की तलाश होती है, वो अपॉर्चुनिटी जब उन्हें मिलते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड वो किस लिए खेल रहे हैं उस पे एक बार गौर फरमा लेते हैं। इट इज द प्राइस पूल जो कि अभी हम आपके सामने लेके आने वाले हैं एंड मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा सेकेंडरी बन जाता है। आई एम श्योर प्लेयर्स भी ऐसे ही सोचते हैं,
बट हाँ, वो एक इनर मोटिवेशन आया था जब एक मैसिव प्राइस पूल रहता है। 1 लाख रुपए एक छोटा-मोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पहले पोज़ीशन पे एंड अप करते हैं, तो आपको 70,000 रुपए मिलेगा और अगर आप दूसरे पोज़ीशन पे हैं, तो आप 30,000 रुपीज़ आप बैग में लेके जाएँगे। सो इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। यहाँ से कोई आगे जाने का ही रास्ता दिख रहा होगा, पीछे जाना कोई भी नहीं चाहता है। ऑलरेडी एक टीम से हम अलविदा ले चुके हैं, जो कि कल के दिन में था। दैट वाज़ हमारे ग्रेट। ग्रे फॉक्स की टीम, जिन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके आगे निकल गए और चिल कॉर्ड्स पीछे रह गए। और अभी एक काम करते हैं, ब्रैकेट्स देख लेते हैं। कल के बारे में तो हम बात कर लिया है। आज के ब्रैकेट में कौन-कौन खेलने वाले हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट मनस्वी। बिल्कुल, तो आज जैसे कि आप बात कर रहे थे, कल ग्रे फॉक्स हमें अलविदा बोल चुकी है। सो चिलकॉड इज द फर्स्ट टीम टू मेक देयर प्लेस इन द ग्रैंड फिनाले, और आज वो सेकंड पोजीशन ग्रैंड फिनाले में जो है उसके लिए लड़ने वाले हैं मेडल ई स्पोर्ट्स एंड आरओजी एकेडमी। एंड लेट्स टॉक अबाउट मेडल ई स्पोर्ट्स एंड आरओजी एकेडमी. Both the teams very strong. We have seen them put up great shows, great performances so far in the tournament, और वैसी ही कुछ परफॉर्मेंस आज मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ. ऑफ कोर्स एंड आई थिंक दोनों टीम्स ने ज़रूर से प्रिपरेशन की होंगी एंड इससे पहले इन लोगों ने एक लंबा क्वालिफायर का सफ़र भी तय किया है। वो ऑफ कोर्स ऑन स्ट्रीम नहीं था बट वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छे फाइट्स निकाले थे, उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया जिस वजह से वो आज ये मुकाम तक आके पहुँचे हैं। अब यहाँ से रास्ता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, ईज़ियर बिल्कुल भी नहीं होगा। और वो मैप वीटो तो आएगा बट उससे पहले आई थिंक मेडल एज ए टीम हम जानते हैं कि वहाँ पे कुछ जाने माने प्लेयर्स भी हैं जो काफी ज्यादा रोस्टर चेंजेस से गुजरे हैं, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। वहाँ पे बैटमैन, आई एम श्योर बैटमैन को बहुत लोग जानते हैं। आई थिंक उन्होंने शुरुआत बहुत अर्ली किया था विद वैलोरेंट, क्योंकि उन्होंने भी एक डिफरेंट गेम से शिफ्ट आउट किया था। तो दीज प्लेयर्स हैव डन गुड बट टू इम्प्रूव मोर उनको ऐसे टूर्नामेंट्स में आके अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखाने होते हैं। एंड आरओजी एकेडमी सेम एक और ऐसी टीम जिनको पहले भी हम खेलते हुए देख चुके हैं, काफी मल्टीपल इवेंट्स में अच्छा किया है उन्होंने। एक काम करते हैं, मेडल की बात कर ही रहे हैं, मेडल का लाइनअप देख लेते हैं कौन कौन खेल रहा है उसमें मनस्वी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मिडल ई स्पोर्ट्स काफी ज्यादा रोस्टर चेंजेस से गुजर चुकी है। तो उस आज की उनकी लाइनअप में जैसे आपने कहा, बैडमैन, ही इज बीन विद मेडल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही इज गोइंग टू बी द वन विद easy fox godvexy and tricky. All of these guys have been playing with each other for a long time, इसलिए हमें पता Yeah, ही है इनका सिनर्जी, इनकी टीम प्ले जो है वो काफी अच्छी तरीके से ऑलरेडी बन चुका है. सो आई करेक्ट। हैव रियली हाई होप्स फ्रॉम मिडल ई स्पोर्ट्स टुडे. या मतलब आपने एक्सपीरियंस की बात करी, राइट? इनके पास वो एक्सपोज़र है, इन्होंने मल्टीपल टाइम्स अच्छे ओपोनेंट्स, अच्छे कॉम्पिटिशन को फेस किया, जिस वजह से उनको पता होगा शायद कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे शायद एक टफ क्लच मोमेंट होगा, वहाँ से कैसे निकलना है। दैट इज़ अ बेटर वे टू फ्रेम, आई थिंक कह सकते हैं। बट एक काम करते हैं, आरुचि अकेडमी के लाइनअप पे भी एक बार गौर फरमा लेते हैं। आरुचि अकेडमी एक और अच्छी टीम, बट लेट्स सी कि क्या ब्रैड, क्रूल्स, वॉर्टेक्स, पैंजर एंड लेवी कुछ कमाल कर पाएंगे कि नहीं। आई एम श्योर ये लोग भी उतना ही पोटेंशियल रखते हैं। और जो टीम्स नए होते हैं ना, आई थिंक कल चिलकॉट को देख के भी ऐसा कुछ वाइब आ रहा था पहले मैप में, जहाँ पे ऐसा लगा कि शायद ग्रे फॉक्स एक 2-0 के साथ खत्म कर देंगे, बट चिलकॉट ने बहुत शानदार तरीके से कमबैक किया एंड तीसरे डिसाइडर के मैप में अच्छा खेल के जीत हासिल करके वो स्लॉट को छीना है ग्रे फॉक्स से। तो जब भी कोई नया टीम होता है वो अनप्रेडिक्टेबल चीज जरूर से ऑन द प्लेट लेके आते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे आरओजी एकेडमी से कुछ ऐसा ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा। Bilkul. I mean, I have actually seen Panzer play in some tournaments. Others are relatively new for me, at least. So I'm very excited to see what kind of game are they gonna show us. But उससे पहले हम लोग जाएंगे मैप वीटो में, देखते हैं कि कौन से मैप्स आज हम खेलने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं. Yeah, exactly. I think आइसबॉक्स, ओके, इंटरेस्टिंग। कल हमें पहला मैप आइसबॉक्स देखने को मिला, तो आइसबॉक्स एसेंट, हेवन एंड पर्ल विल नॉट बी प्ले टुडे, क्योंकि ये चारों मैप्स बैन किए गए हैं टीमों के द्वारा। पहला मैप आज का ब्रीज होगा। सेकंड मैप इज फ्रैक्चर एंड डिसाइडर, अगेन इज अ बाइंड मनस्वी। तो काइंड ऑफ दोनों चारों टीम्स का प्रेफरेंस दिख रहा है। एंड काइंड ऑफ जो मैप्स पहले जब अर्ली बीटा स्टेज में वैलोरेंट यहाँ पे लॉन्च हुआ था, बाइंड, हेवन, ये मैप्स ज्यादा अकस्टम्ड है प्लेयर्स एंड दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड उस चीज का फायदा होता ही है। बट ब्रीज पहला मैप
इंटरेस्टिंग चॉइस, लेट्स सी। कल हमें डबल इनिशिएटर का एक मेटा देखने को जरूर से मिला था, प्लस डबल डुएलिस्ट भी देखने को मिला था। आखिरी बाइंड में जाके डिड वर्क, बट इन ब्रीज वो वर्कआउट जरूर से नहीं किया। सो इंटरेस्टिंग टू वॉच कि आज के ये ब्रीज मैप पे ये दोनों टीम्स करने क्या वाले हैं। आई एम श्योर कल हमें साइफर देखने को मिला नहीं था, बट मे बी अ साइफर, क्योंकि बैडमैन है। आई हैव सीन हिम प्ले साइफर, लेट्स सी। वो स्पेकुलेशन शुरू हो चुका है मनसी। बिल्कुल, Batman definitely plays a very mean cipher. In fact, I've gotten, I Yeah, would like to brag, I've gotten some tips and tricks from him to play cipher. But I've also seen him play a lot of controller as well, correct. as a sentinel and a controller. So I'm actually expecting, since it's a breeze, we're starting off with breeze. Mhm. Maybe he'll go in with a controller. But let's stop speculating and actually देखते हैं कि इस क्या हो गेम रहा है? में होने क्या वाला है। या साइफर, बट ही इज नॉट प्लेइंग इट दो। एक्चुअली देखना पड़ेगा कि कौन खेल रहे हैं साइफर। इट इज ओके, नेवी जेस्ट आरओजी एकेडमी की टीम साइफर लेके आए हैं, एंड एजी इज ऑन द चेंबर। सो दोनों टीम के पास ही एक अच्छा सेंटिनल है, जो कल के मैप में हमें देखने को नहीं मिला था। कल के एक टीम के पास एक सेंटिनल था, सेकंड टीम डिडंट हैव दैट। सो इट विल बी अ गुड कंपटीशन टू वॉच मनस्वी, बिकॉज डबल इनिशिएटर यहाँ पे भी है। दिस टाइम इट इज अ स्काई एंड अ सोवा। हमें पता है कि ये स्काई एंड सोवा कॉम्बिनेशन कितना डेडली हो जाता है, बिकॉज वो स्काई के फ्लैशेस के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आप साइड रीटेक्स में हेल्पफुल हो सकता है, एंड प्लस आप ओपोनेंट्स को ब्लाइंड करके उनके एलिमिनेशन तो निकाल सकते हैं। बट दो इंटरेस्टिंग टू वॉच इज कि दोनों टीम के पास ड्यूलिस्ट जेट ही है। बिल्कुल, आई मीन इस मैप में अगर देखा जाए तो द मोस्ट इम्पैक्टफुल डुएलिस्ट, इफ यू वांट टू गो फॉर अ डुएलिस्ट, वुड बी अ जेट और अ नियॉन, बट आई एक्चुअली हैवंट सीन नियॉन बीइंग प्लेड अ लॉट Select लेटली, your agent. सो या ट्रिकी विद जेट एंड okay, yeah, he does go in with Jed. I was not quite sure, but yeah, बैटमैन जैसे हमने बात करी थी, कंट्रोलर के साथ साथ और स्काई भी है हमारे पास दोनों टीम्स में. So we have a balanced team, almost the same kind of lineups over here. A single duelist, a single sentinel with the double initiator. So this will be definitely interesting to watch. ऑफ कोर्स, एंड इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो कल हमें मिड कंटेस्ट करते हुए दिखे थे टीम्स, सो आई एम होपिंग, क्योंकि ब्रीज पे देखिए स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। विद सोवा आप एक एरिया पूरा इन्फो निकाल सकते हैं। आपके पास रिकॉन बोल्ट्स हैं, एंड स्काई के साथ ट्रेल ब्लेजर होगा तो उससे भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आपका एक एक साइड पूरा स्लॉट हो जाता है, एंड आप अगर चाहें तो जेट के साथ भी एक कॉम्बिनेशन प्ले कर सकते हैं। वाइल रिकॉन गोज, इंफॉर्मेशन निकल गया, जेट डैश इन करके शायद एक क्विक एग्जीक्यूशन निकाल सकते हैं। प्लस स्काई के ट्रेल ब्लेजर के साथ अगर वो कंकस कर देते हैं तो जेट वर्क्स विद बोथ द इनिशिएटर्स वेल। लेट्स सी कि कौन एक अच्छा लीड लेके जाना चाहेगा इस मैप में, क्योंकि पहला मैप ऑलवेज वो मेंटल बूस्ट, वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप के तरह तौर पे जरूर से वर्कआउट करता है मनसी। Bilkul, bilkul. And there we go. We are about to go into the round number one. ROG Academy Revealing towards area. अटैकर साइड. और यहाँ पे जैसे आपने बात करी थी मिड कंटेस्ट होने की, डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस है मिड कंटेस्ट होने की. वी आर सीइंग अ पुश कमिंग इन फ्रॉम डबल डोर्स एज वेल एज, ooh, look how far the jet has pushed. So yep, डेफिनेटली मिड कंटेस्ट होने वाला है यहाँ पे. वी हैव rules over here who's actually guarding the area of halls, but first contact ho chuka hai. ROG Academy definitely knows there is somebody coming their way, and Fox gets knife just यहाँ पे काफी ज्यादा distance से उन्हें fight लेनी पड़ी, but ooh, there we go. Panzer gets a pick. That will be definitely an entry into the site A, but यहाँ पे बहुत जल्दी rotation आ ही चुका This is है, not good. and he knew that there might be somebody on flank, but Badman too good with his classic gets a headshot on him. I mean, उसके पास Last मौका था, अगर player वो standing. बैटमैन को एलिमिनेट करते थे तो शायद व्यक्ति भी थोड़ा सा कंसर्निंग स्पॉट पे आ सकते थे। बट नाउ इट्स एन इजी राउंड कन्वर्टेड फॉर मेडल स्पोर्ट्स। उन्होंने पहले इनिशिएट किया मिड पे। देखिए, जब आपके एक ड्यूलिस्ट एंड एक इनिशिएटर मिड पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द यूटिलिटीज, तो फिर आप मैप पे कितना ज्यादा स्पेस कंट्रोल या फिर स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ये भी दिख जाता है।
एंड उनको पता लग गया था कि मिड पे कोई नहीं है, या तो वो ए साइड की ओर है या तो बी साइड की ओर है। साइफर जैसे उन्होंने पिक किया, उनका पिक निकाला फॉक्स ने, एंड वो इनिशिएशन मिल चुका था। तब तक मेडल के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन था, एक नंबर्स एडवांटेज मिल गया था, एंड दैट डिड द ट्रिक फॉर देम। नाउ अभी अब ये राउंड में उनके पास अग्रेसिव बाइज होंगे। अब देखिए एक बुलडॉग ट्रिकी के पास दिख रहा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग, बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि जब भी हमने ये इको राउंड देखे हैं ना, मुझे डर लगता है उन टीम के लिए जिसके पास अच्छे बाज होते हैं, क्योंकि वो ना कुछ ऐसी चीजें ट्राई आउट करने जाते हैं जो यूजुअली एंड्स अप गेटिंग थ्रोड। तो राउंड कभी-कभी ओपोनेंट के पास चला जाता है। बिल्कुल ये, बट अगर एक चीज आपने नोटिस करी, एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग चीज थी कि डी रूल्स जो है वो लिटरली जो है कि स्पॉन तक पहुंच गए थे मिडल ई स्पोर्ट्स के, वो भी बिना नोटिस हुए। अगर अगर वहां पे डी रूल्स को किल मिल जाता बैटमैन पे, तो दैट वुड हैव बीन वेरी वेरी बैड फॉर मिडल ई स्पोर्ट्स। बट सैडली वहां पे एक एम गेम में थोड़ा सा मार खा गए। But I think maybe Middle East sports needs to be a little cautious about their positionings and how they are po- positioning themselves. Like we're talking, and there we go again. यहाँ पे contest होने वाला है over the halls area. या अभी के लिए तो स्लोअर अप्रोच ही दिख रहा है फ्रॉम आरओजी साइड एज वेल। गॉड वेक्स इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनके पास आउल ड्रोन है, ही नोज टनल का एरिया चेक किया उन्होंने। हालांकि नैव जेस्टर अभी तक उन्होंने पीक नहीं किया है, एंड ही इज आल्सो होल्डिंग दैट टनल एंगल। तो स्पाइक जो है वो बी की तरफ ही मूव इन करा, तो ये एक बी एग्जीक्यूशन हो सकता है। बट ट्रिकी को देखिए, वो मिड का एरिया होल्ड करके रखे हुए हैं, एंड अगर वहां से कोई प्लेयर पीक आउट करता है तो सीधा ट्रिकी के लिए इजियर होगा। बट रोटेशन आई थिंक गलत हो रहा है ये मेडल के लिए, क्योंकि मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये ए एग्जीक्यूशन हो सकता है, बट प्लेयर्स हैव मूव टुवर्ड्स बी साइड। एंड बैटमैन है, बैटमैन जंप करके स्पॉट तो कर लेंगे, एंड वो रेडी है अपने स्नेक बाइट के साथ। बट द प्रॉब्लम इज बैटमैन के पास में क्लासिक है, नो ही हैज अ वैंडल। आई मिस आउट इन्फॉर्मेशन में सोच रही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ही क्रूज, ही गेट्स द वैंडल, एंड मैंने कहा था ये प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ ही क्रूज इज अ क्रूशियल प्लेयर, उनके पास साइड कंट्रोल है, ये एंगल अगर एक्सपेक्ट नहीं किया प्रॉब्लम, बट नो एजी एंड ट्रिकी दोनों ने एक्सपेक्ट किया। बैटल आज तक इनके पास रीटेक फिर से इजी हो चुका है, बट इट्स अ 3v2 सिचुएशन, एनीथिंग कैन हैपन। प्रॉपर फाइट नाउ, One enemy remaining. बड़े आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे, एंड ये राउंड भी सिक्योर कर लेंगे। बट थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था ये राउंड शायद आरओजी एकेडमी ने पुल आउट कर दिया है। Bilkul. I mean, that was a very good entry coming from the rules. But at the end, I mean, it was about the retake. Of course, firepower जो है वो मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स के पास ज्यादा थी. Even though एक दो guns already आ चुकी थी ROG Academy के हाथ में, but overall they did get a plant and they did drop a couple of guns from the side of Middle East Sports. So looks like that was a fruitful round for ROG Academy, but concerning चीज है कि ये राउंड, this is a full buy round for ROG Academy. The third round always very crucial when you've lost two consecutive rounds in the beginning itself. So we are hoping कि this round should go in. Yeah, and look at that push. Look at that push. Middle Esports, they just don't have any chill. They are just not giving any map control to ROG Academy. Halls की तरफ से push आ रहा है. B main की तरफ बस अकेले Batman ही है. Now he gets the support, but right now ROG is just spread over everywhere. आई थिंक आरओजी से ज्यादा मुझे स्प्रेड आउट तो मेडल के प्लेयर्स, क्योंकि ट्रेल ब्लेजर का इस्तेमाल किया उन्होंने, पूरा एम इन एरिया क्लियर आउट कर दिया है। उनको पता है कि क्लोज तो कोई नहीं खेल रहा है। अब आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि ये बी साइड का एग्जीक्यूशन हो सकता है, एंड स्पाइक भी सोवा के पास है, एंड ही इज होल्डिंग इट आउट। एंड ये जो जेट का पोजीशनिंग है ना, अगर वो गलती से ए साइड की ओर जा रहा है, इफ दे डू नॉट चेक आउट दैट एंगल, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट। बट लेवी यहां पे फॉक्स को एलिमिनेट करते हैं, एंड सडनली बी साइड इज वाइड ओपन नाउ। Sova and Batman जरूर से हैं, and Batman is doing the same thing again, but Brad यहाँ पे ट्रिकी को भी eliminate करते हैं। Again, वो aggressive push हो रहा है मेडल की तरफ से। One enemy remaining. लेवी यहाँ पे Batman को भी shade out कर देंगे। अब अकेले बचे हुआ है बस चेम्बर, that is Easy, and he doesn't have a gun.
स्पाइक प्लांट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड ऊपर से साइफर, इसीलिए साइफर इतना ज्यादा कभी-कभी मुझे लगता है साइफर सेंटिनल्स ऑफ कोर्स ही इज अ सेंटिनल बट इंफॉर्मेशन कितना ज्यादा मिल जाता है आपको उससे कैमरा की वजह से एंड नाउ एजी स्पॉटेड उनको पता है कि प्लेयर्स स्प्रेड आउट होंगे डजंट नो बट ब्रैड मच एजी गन रिकवर कर सकते हैं बट साइफर कैमरा फाइनली ही ब्रेक्स इट बट तब तक आई थिंक अंदर उनको खत्म करेंगे इजी राउंड फॉर आरओजी एकेडमी वो जो पुश आया था वो जो इंफॉर्मेशन लिया था मेडल के प्लेयर्स ने उस पे वो फिट आउट कर सकते थे कंफर्टेबली बट वो जो एक्स्ट्रा ओवरपीक आया फॉक्स की तरफ से एंड ट्रिकी की तरफ से सेकंड हाफ में वो शायद से राउंड खराब कर गया Bilkul. That was actually very impressive round coming from ROG Academy. I think now that they have the first round in their favor, they definitely will get that confidence boost to go around and uh, do the same executions because इससे पहले if you see they were kind of hesitating on committing to a single side. There we go. We have information towards the B side. Metal Fox just has Spectre in his hands. But there is already an infiltration in the site. We have. Oh, okay. Wow. Somehow he just goes completely unnoticed. But Vexy gets a kill. Tricky Batman. They are getting. They are bringing down the numbers on the side of ROG Academy. And well, Batman, he rotated all the way from B. Did not hesitate, putting bullet in 3 people's head and ending that round. That was a comparatively very easy retake, but the problem is they did not expect or they did not spot Vexy at all because of the positioning that he was in. I mean, he was just hiding very comfortably behind that Viper wall. आई मीन टाइमिंग मैं कहना चाहूंगा मनस्वी क्योंकि वॉल के अराउंड उसने काफी अच्छा गेम बना दिया उस सिचुएशन में ही गॉट वन पिक वो काफी जरूरी था वो जो प्लेयर पिरामिड के एरिया पे खेलता है अगर फास्ट ए पुश आता है वो प्लेयर का बिना कोई पिक निकाले पिक हो जाना ऑलवेज इज अ माइनस मार्किंग फॉर द टीम ऑन द डिफेंडिंग हाफ बट वो चीज नहीं हुआ वो वैक्सीन ने होने नहीं दिया वही बोला ना मैंने एक्सपीरियंस है इन प्लेयर्स के पास कि अगर ऐसे सिचुएशंस आते हैं अगर रिकॉर्ड्स आते हैं अगर इवन इफ केओ आता उस सिचुएशन में सप्रेस होता तो कैसे उस सिचुएशन को डॉज आउट करना है दे नो इट एंड शायद आरजे पार्टी में प्रिपेयर्ड नहीं थे एक अच्छा हॉल्स पुश आया था बट ठीक है अभी नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है अभी के लिए मिडिल ट्रिकी के पास ऑपरेटर आ चुका है फिर से मिड पे अग्रेसिव इतना ज्यादा मैप कंट्रोल क्रिएट करके दे रहे हैं ट्रिकी मेडल के लिए एंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है विदाउट अ इनिशिएटर यहाँ पे कोई नहीं है या तो वो बी साइड की ओर होंगे या तो वो ए मेन की तरफ होंगे एंड आई थिंक फॉक्स के गाइडिंग लाइट से वो इंफॉर्मेशन मिल चुका है पिक निकाल दिया है ट्रिकी ने एक पिक निकाल दिया है अब ये राउंड एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट होगा ओह एजी Last player I standing. mean, he gets third kill as well. That too, and just all he knows, God Vexy, he knows for the fact that last player is here, and he puts a bullet in Panther's head, ends that round, gets that Vandal. I mean, it looks like it's too easy for Medal Esports. They're just not letting ROG Academy get any kind of map control over here, any kind of movement. They just restrict it. They have been pushing towards mid. They've been flanking, and it's been working so well for ROG Academy. I think the only point that ROG Academy is missing out on is the duels that is happening between them. I mean, जो aim fights है वहाँ पे जैसे ही miss out कर देती है ROG Academy and they have to pay the price for that. Yep. इस बार फिर से I've got your इजी trail. बहुत आगे जा चुके हैं टीकर से इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगा नाउ इजी इज इन अ कंसर्न बट आई मीन क्रूल एंड पैंथर ने मिलकर एशियन फॉक्स दोनों को एलिमिनेट कर दिया है यही चाहिए था यही इंफॉर्मेशन आरओजी के प्लेयर्स को रिक्वायर्ड था नाउ दे नो कि ए साइड पे एक इजियर एंट्री होगी कि ए साइड के दोनों प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं एंड मिड पे अभी भी अगर आप देखें तो इट्स रूल्स हु स्टिल होल्डिंग इट आउट इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुका है नैवजेस्टर को एंड वो रोटेशन आ रहा है स्पाइक प्लांट हो जाएगा बड़े आसानी से बट बैडमैन दिस कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक अगर ये प्लेयर का पोजीशनिंग एक्सपेक्ट नहीं किया ट्रिकी भी अब देखिए आ चुके हैं सिटी साइड पे एंड ही इज चेकिंग आउट द कॉर्नर्स Spike planted. बैडमैन
वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर बैटमैन यहाँ पे 2 पिक्स निकालते हैं, यस ही गेट्स 1 बट ही नीड्स मोर, क्योंकि अभी भी नंबर्स एडवांटेज है, बट स्टिल इट इज डूएबल। यहाँ पे मनसी ये सिचुएशन, अब देखिए इंफॉर्मेशन जाएगा, यस बैटमैन चलता आता, बैटमैन डिलीवर्स 2 पिक। नाउ अगेन भी कन्वर्जन हो जाएगा, बट रूल्स एंड नैव जेस्टर ये नहीं होने देना चाहते बैटमैन के लिए। ये राउंड जो है एक केस में खत्म होना पड़ेगा अगर वो जीतना चाहते हैं। दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। नामुमकिन नहीं, मुमकिन तो है। Honestly, that was beautiful. Bilkul. I mean, that was a beautiful shot coming in from Batman. But this round, let's give props to ROG Academy. TC Rules and Panzer, both of them, they did very well guarding the spike until the end moment. And especially Knife Jester, he just went ahead. He tried to clear the side for his team while his team was just looking out for every angle. Because this is what has been happening. Medal Esports, they have been putting a lot of pressure over ROG Academy. They've been pushing from every side. And this time around, ROG Academy made sure not to let that happen. They took the charge and got the round for themselves. So finally, a second round for ROG Academy. We are getting into the 7th round of the first map. And Abhi, देखे तो DC Rules again trying to contest the area of halls or halls where I don't think there is anybody to contest them because Blocking sight. let's see if we have a trap, but immediate fight लेने के लिए I think we only have Sova that's got Vexy who has actually heard that smoke being deployed from Viper. Right So here. yep, No, I mean, the areas. Oh, he spots out. एजी का पोजीशन भी मार्क He- Scanning ahead. Nowhere to run! हंटर फ्यूरी कमिटमेंट आ चुका है एंड आई थिंक एजी का पोजीशन एजी को मार्क भी कर दिया गया है, बट स्टिल ही हैजंट लेफ्ट दैट पोजीशन। यही मैं कह रहा था, ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नाव जेस्टर मिड एंगल से आई थिंक ट्रिकी को फ्लैंक कर रहे हैं। दैट कैन बी अ बैकस्टैब। सीकर्स का इस्तेमाल हो चुका है, बट ट्रिकी सीकर्स के साथ मोमेंटम मिलता है, इमीडिएटली घूम के ऑफ टॉप पिक ही गेट्स टेकन आउट। Last player standing. जो पुश आया था बैटमैन का, Spike down A. connect कर देंगे। स्पाइक प्लांट नहीं हुआ है, but Brad is still alive and he taking it down. Oh, tricky operator. ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं, but Brad ने ट्राई अच्छा करा उस सिचुएशन में, but still बार-बार I think हॉल पे अगर आप ऐसे अग्रेसिव जाना चाहते हैं तो फिर आप इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। आप इतना ज़्यादा साउंड दे रहे हैं जेट के स्मोक के साथ, एवरीथिंग यू आर डूइंग इट। आपको आई थिंक थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन करने की वहाँ पे जरूरत थी, बट आई थिंक सीकर्स का वहाँ पे अच्छा इस्तेमाल किया गया बाय फॉग। वो इन्फॉर्मेशन मिल गया क्योंकि उनको पता लग गया कि नैप जेस्टर पीछे से एक मिड की तरफ एक फ्लैंक आ रहा है, उनको एलिमिनेट कर दिया, इट्स वाज डन एंड डस्टेड देयर। Bilkul, and Tricky just expecting a push coming in. Wow, that was a beautiful shot coming from Tricky over Knife. Just he has been taken out, and that looks like a bad start for ROG Academy. Tricky though misses his shot over what I think that was DC Rules, who has Marshall in his hands. So they do have an information that this might be a push from mid towards A, and players at A, they are ready for that push to come in. Panzer over here, he has a Marshall in his hands, and he is expecting Ezzy, but as he just one bullet ends Panzer. Look at Batman. Enemy remaining. No Batman. Oh my god. हर तरफ से कुछ आ चुका है। इको राउंड है उनके लिए। They knew it. उनके पास अच्छे बाइज नहीं थे। एजी ने पुश किया, हाँ पुश मार्क हो रहे थे, बट इको राउंड में आपको अपने शॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ, हालांकि आपके पास सेडिफ हो या फिर मार्शल्स हो, कल भी हमने देखा था इको राउंड में जब इको राउंड्स कन्वर्ट करने होते हैं, इफ यू आर टेकिंग एनी ड्यूएल, आपको पहला शॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वो मिस आउट कर दिया, आपको सेकंड चांस नहीं देने वाले हैं ओपोनेंट्स। एंड मेडल के प्लेयर्स ने बहुत अच्छी तरीके से परखा वो चीज को, एंड ट्रिकी मतलब बॉल्जी मूव्स हर जगह पे, जिधर भी खेल रहे हैं, चाहे वो मिड एंगल डबल डोज हो। इस टाइम पे देखिए मेटल डोज से पीस लेने की कोशिश करेंगे। आई थिंक गॉड देखिए को वो स्पेस क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। इमीडिएट रिकॉन बोल्ट आया ताकि वो इंफॉर्मेशन मिल जाए, बट एडमेंट से पूछा लेवी ने उनको इमीडिएटली एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, नलिफाइड फिर आउट निकालेंगे। ब्रैड गेट्स टेकन डाउन एज वेल, बट उससे पहले एक्शन इज हैपनिंग व्हेन फॉक्स अकेले खड़े हुए हैं बाहर बनके। स्पाइक प्लांट करने का मौका मिल चुका है। सिचुएशन ट्रिकी आ रहे हैं ऑपरेटर रूल्स आउट निकाल पाएंगे ट्रिकी को।
कम कर देंगे एजी ये डबल ऑपरेटर सेटअप उनके पास उनका चेंबर ऑपरेटर हो गया था एंड बहुत ही अच्छा राउंड जिसका शुरुआत शायद अच्छा नहीं हुआ था मेडल के लिए उनको भी कन्वर्ट कर लिया मेडल ने। मैंने बोला ना these guys have that experience honestly उनको पता है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर एलिमिनेट होता है बट फिर भी they know how to pull those rounds back into their favor. Indeed. I mean, ROG, they definitely need this tactical timeout because the way things have been panning out for them does not look very good. They are on a score line of 2-7 Medal Esports in a, let's say this is a very comfortable lead that Medal Esports has gotten. And like we were talking about this, the map control that Medal Esports has been getting from the first round itself, it's as if they have read ROG Academy's playbook page by page. They know for the fact that they can build a pressure over them, and they have been doing it. They have been cashing out on it. Those duels, those aim duels, RG Academy seems to be losing those, and well, they've been punished for that very bad. So either they have to be very strategic about their moves, or they just need to put those aim skills to work. I think मुझे काफी अच्छा लगा था जब बैटमैन को वहाँ पे एलिमिनेट किया गया वाइपर जब यूज होता है सोवा का यूज एंड प्लस लेवी का एक डबल डोर से पुश भी आया था एंड इट गॉट दैट ओपनिंग। तो अगर आपको ओपनिंग मिलता है नाउ द प्रॉब्लम इज अब आपके पास डबल ऑपरेटर सेटअप है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बी साइड पे आई थिंक ट्रिकी इज रेडी एंड ए साइड पे आई थिंक हॉल्स की तरफ एजी वहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेवास्टेटिंग, ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। प्लस ये ब्रीज का मैप है एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज को। लुक एट पैंजर आगे तो बढ़ रहे हैं बट ही नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। आप देखिए एजी तैयार है, एजी को भी पता है कि कोई प्लेयर हॉल्स पे है एंड प्लेयर हालत वन पिक, ही नीडेड दैट वन पिक, ही इज एक्सपेक्टिंग मोर। साइफर का पोजीशनिंग पता लग सकता है बट एजी फिर भी ट्रैप है अभी भी। नावजेस्टर को ट्रैप तोड़ना पड़ेगा या तो ट्रैप उनका खुद का आई थिंक ट्रैप डाल के निकलना पड़ेगा व्हिच विल ऑब्वियसली गिव हिम दैट साउंड। Definitely. I mean, Knife Juster, he definitely hears that trademark coming in. Ooh, okay, tricky. All right, he missed that first shot and immediately goes in with a Blade Storm. He is just getting himself ready. Easy. It gets that easy kill on Knife Juster. I mean, Knife Juster knew for the fact that there was an operator holding Easy standing right in front of him. 30 Still seconds managed. left. One enemy Okay, remaining. Levy. Tricky misses the whole of this Blade Storm, but he has his teammates to take care of the B side. Easy with a 3K, 8th round for Medal Esports. I mean, this time around, ROG Academy tried to play a little spread out. They tried to be patient and slow with their moves, but it's just not working. Medal Esports, they are too strong. Looks like they are too strong for ROG Academy, at least for this map. Let's see what happens when they go in the defense side. I mean, मनोज आप देखिए अगर आप स्लो करेंगे दो ऑपरेटर सेटअप के साथ आप मेडल ई स्पोर्ट्स के फेवर में ही आप राउंड जाते हुए दिखेंगे कि जितना स्लो होगा उतना ही प्रेडिक्टेबल हो जाएगा मेडल ई स्पोर्ट्स के लिए। गाइडिंग यूज हुआ बट स्टिल ही गॉट दैट बैटल। क्या क्या है एजी और एजी कैन बी एलिमिनेटेड। तब यूज हो चुका है। दिस कैन बी दैट फ्रूटफुल राउंड once again. Eddie still survive. Sheriff guys है. Tricky Spike down A. And I think Levy miss out नहीं करेंगे. Last player One versus standing. two. Okay, Levy. Okay, Levy. One We see you. A 3 kills spike with abhi Sheriff. bhi. The fourth one with with Vandal. I mean, that was completely beautiful. That was amazing. And Levy, I think he can definitely do that. And he knows for the fact that Easy is probably very low. He's getting that call out from his Sova. So all he needs to do is spot him out before Easy does. And Easy, we have seen him do great things with that operator. Will he be able to get this kill as well? Is the question. I mean, Levy definitely has a lot of time to make a rotation, go back to B, but I 30 think seconds Easy. Yep, Easy is expecting that. He knows for the fact that he might have to go back to A main or
Yep, he's just going to try and get a kill from this angle. That is the metal doors. What do you think, Oro? I mean, this 1v1, it's very interesting. Levy has proven his aim, and I think this might just work out in his favor. Yeah, but मुझे समझ में नहीं आया कि आप good round converted for RG Academy, but I don't know Last round why in the half. he had to leave that spot जहाँ पे उनके पास spike था. बहुत ज़्यादा forceful fights हो गया, but बहुत अच्छा round convert किया यहाँ पे ROG Academy ने, क्योंकि उनके पास ultimates थे. They could afford that. And उसका बहुत बढ़िया यहाँ पे दारोमदार देना पड़ेगा. I mean, Tricky knows कि Tricky ने ये round शायद अपने हाथ से गवाया है मनुष्य, कि उसने वो नहीं, वो shot miss किया था. He missed that operator shot ये mid double dose पे, right? उसके बाद एजी ने उनको गन उठा के eliminate कर दिया. लेवी ने उसको eliminate कर दिया. अभी के लिए round शुरू हो चुका है, information मिल चुका है एजी को. उनके पास ultimate available है, and he has that operator online. Chamber on that operator, the fastest operator in the game, can be devastating. अभी के लिए देखिए कितना आगे जा रहे हैं, and I think अगर कोई backup नहीं है नैप के पास, but no, Eddie, this is the shot. Oh my god, no, everything is happening. Suddenly वो momentum shift दिख रहा है मुझे. RG Academy के पास वो confidence नजर आ रहा है जो शायद missing था पिछले कुछ round से. Bilkul. I mean, DC rules over here. He is still going to wait for somebody to pick a peek over the halls. So let's see if he manages to actually get that contact. But what happened in the mid doors is, I would like to say, I mean, Medal Esports is being a little overconfident over there, and maybe just ROG Academy has caught a wind of what they're trying to do. Okay, 30 DC rules, we seconds see you. They get this first kill on Fox. DC rules. Oh my god, that was an insane shot. Easy has been taken down. My Vexy God. just spots him, takes a few shots. Okay, DC misses it out, but he knows for the fact that Vexy is right around the corner. He expects his position, takes one more shot. Oh my god, he takes him down. Badman though comes right on the time. He takes DC rules down, so it's up to Tricky and Badman to retake this round. Viper's Pit is online. This should be an Last player easy standing. plant, but and Knife Jester takes Batman down as well. So a 1v4 situation for Tricky. Is this happening? Panzer, nope. Not even gonna let him enter the Viper's Pit. He's gonna take him down as a single bullet, and that would be a round for ROG Academy. A beautiful, beautiful couple of rounds we have seen from This ROG shot, Academy. my god. I mean, this was completely unexpected. रूल्स ने 3 निकाले पिछले राउंड में. आई थिंक दैट वाज सम क्रेजी ऑपरेटर एक्शन. मतलब यही होता है. मैंने कहा था ना कि आरओजी एकेडमी के प्लेयर्स आर लुकिंग कॉन्फिडेंट नाउ. अभी आपने एक पॉइंट मेंशन आउट किया था ना कि वो एम डुएल्स नहीं जीत रहे हैं. अब सडनली लुक एट देम, कितना बेटर टीम लगते हैं अगर आप एम डुएल्स जीतना चालू कर देते हैं. एंड जो चीजें शायद अलाउड भी नहीं है, वो ऑपरेटर शॉट अलाउड नहीं था. लाइक एजी का बस एक पिक्सल दिखा था उनको, एंड ही स्टिल took that shot and he connected. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरओजी के प्लेयर्स के लिए टू विन द पिस्टल राउंड. इन्फॉर्मेशन मिल चुका है. I think ये आउट ड्रोन से मार्क भी हो जाएंगे. प्लेयर्स पिन हो चुके हैं, बट स्पैम, ब्लाइंड स्पैम सब completed, but he could have converted it into a big thing, honestly, but still Spike I think planted. plant मिल जाएगा. बट सब बैकअप कर रहे हैं. मेडल के प्लेयर्स आर बीइंग फ्लैंक्ड. स्नैप जेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अगर ये एलिमिनेट हो जाते हैं तो स्पेस मिल जाएगा, बट नहीं. पैंजर ही एलिमिनेट्स बैटमैन. And suddenly, मेडल के प्लेयर्स लुकिंग फॉर सम One enemy remaining. Okay, he gets 2. What was it with Levy again? Smash the ace, but नहीं, इस बार डिनाई करेंगे. And मेडल इनपोर्ट, कोई भी गलती उन्होंने नहीं किया. हाँ, फ्लैंक आया था, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होने की कोशिश करी गई थी, बट मेडल के प्लेयर्स तैयार थे. दे रेड इट एंड उन्होंने राउंड कन्वर्ट कर दिया. Definitely the first kill that DC Rules did get, that was beautiful. A very crisp shot coming in, but we have seen Badman. He's just too deadly with his classic. I don't know how he does it, but it's just too
great to watch. And with that, Medal Esports has gotten the first round of the second half as well. And with a couple of rounds that we did see from RG Academy in the end of attackers, I think they definitely have gotten that confidence boost that they needed by getting those rounds with those kind of situations. So I think they can do it. Batman goes in with Vandal in Oh, second Levy. round. He takes Dive Juster, and Levy is just going in, takes Fox down. Ricky looks in a very One tricky enemy position, gets remaining. Panzer down easy, gets Brad. Badman takes a kill on Levy. Now, Daisy Rules is just waiting for somebody to just, this this might be happening, Uh, or maybe not. He just has a shorty. He's waiting for somebody to push him. He knows for the fact that is going to happen. having fun. मतलब ये राउंड मतलब रूल्स ही न्यू की चोटी के साथ ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. डिस्टेंस में तो प्रॉपर्ली नलिफाई हो जाता है, चोटी पुश भी नहीं कर सकता है उस सिचुएशन में. दैट्स व्हाई क्योंकि एजी ने एक्चुअली कन्वर्ज नहीं किया. एजी भी पीछे चले गए, उनको पता था कि शॉट है, इसीलिए कैन डैश करके आए थे. बट दैट्स ओके. अभी वैंडल बाइज हैं यहाँ पे सबके पास with half armor. This will be a bonus round for them, but I think वो पिस्टल राउंड कन्वर्ट करना बहुत जरूरी था आरओजी एकेडमी के लिए. अगर वो ब्रीज पे एक मैप अप जाना चाहते हैं या फिर ये मैप जीतना चाहते हैं तो. बट अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, बट द डिफरेंस इज ह्यूज. 6 राउंड का लीड है यहाँ पे प्लेयर्स के पास. पैंथर एंड एजी, रूल्स एंड नैपजेस्टर, दो प्लेयर्स इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं. बट इंफॉर्मेशन देखिए कितना आ जाता है डबल इनिशिएटर के साथ. आउलड्रो, रिकॉन, अभी एक गाइडिंग लाइट भी आ सकता है फॉक्स की तरफ से, बट दे आर नॉट कमिटिंग. वो भी थोड़ा स्लो खेल रहे हैं. उनको पता है कि शायद काफी सारे प्लेयर्स ए, काफी सारे क्या सारे के सारे प्लेयर्स ए स्टैक कर रहे हैं. देयर इज नो वन ऑन द बी साइड. ये इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे मिलता है तो शायद से एक बी हिट हो सकता है, बट अभी तक इंफॉर्मेशन लिया नहीं गया है. I think that might be very well coming in soon because Vexy did kind of move towards B, but he is coming back. Oh, Nigel gets tricky and Batman as well. The spike is down. Vexy in a bad position gets taken down by Naive Jester. A 3k for him. I mean, just locking down that A site and not even letting them enter beyond the entrance. That was so beautiful coming in from ROG Academy. And I think they definitely got it. They just need 5 more rounds for the equalizer. If that is happening, now Medal Esports is the one who needs to, take a time out, talk things out, what is happening. Because looks like after the first round that they scored, they look kind of weak over here. I mean, इस बार ROG के प्लेयर्स को देखिए मिड पे बहुत अग्रेसिव है. Oh, he eliminates AZ as well. Okay, base control, map control तो मिल चुका है यहाँ पे ROG के प्लेयर्स को, but हॉल्स की तरफ से प्लेयर्स ने ऑलरेडी पुश इन कर दिया है. And I think Batman is in. Levy is waiting. Levy का position बहुत crucial है, but Panther eliminates Fox. And Panther eliminates Fox as well. In a very concerning spot, but Batman अभी भी जिंदा है. One enemy remaining. Ultimate Viper split का भी इस्तेमाल किया, but Viper को भी eliminate किया जाएगा. It is Levy and Tricky who is fighting it out, but Tricky gets 2. Can he do it? Spike उनके पास है. 61 HP के साथ information मिल जाएगा. Recon dart भी तोड़ा जा चुका है, but he knows. No, not just elimination. It got too difficult. I mean, it's too much to ask from a player जब आप अकेले बचे हुए हो कि आप एक-एक करके सारे प्लेयर को एलिमिनेट कर दो. ऐसा नहीं कहूँगा कि ये doable नहीं है, but it's still difficult. And ROG Academy का जो vibe है, वो थोड़ा सा positive side पे ही दिख रहा है मुझे. The way they pushed in and got AZ, वहीं पे दिख गया था कि information उनको मिल चुका है, and ये एक A hit होने वाला है. Bilkul. I mean, the moment Levi lost that duel, I mean, as far I've seen, it looks like from RG Academy, Levi is the best. I've seen like aim, yeah, aim wise, he's the best, and he lost that aim duel to Tricky. And for a moment, I was like, oh my god, are we seeing a 1v4 situation? Are we seeing this clutch happening? But no, Knife just was right on the corner. He gets that kill, he scores that round for his team. So the difference, the um
जो 5 राउंड्स का हमें डिफरेंस दिख रहा था वो थोड़ा सा कम हो चुका है. इट्स नाउ 6 राउंड्स फॉर ROG Academy and I still think they have got a great momentum, especially when Middle East Post they don't have a buy at all except for Badman who has a Vandal in his hands. um let's see this round should be pretty easily going to ROG Academy's bank as well. Yeah. लेट्स सी. दो वैंडल बाइज हैं यहाँ पे बैटमैन एंड एजी के पास, एंड वी हैव सीन मेडल की इको बाइज एंड शेरिफ्स कैन बी डेडली. एंड एक ऑलरेडी हमने इको राउंड कन्वर्जन देखा है फ्रॉम आरओजी साइड जब उनके पास अल्टीमेट्स थे, बट इस बार सिर्फ ट्रिकी के पास ब्लेड स्टॉर्म अवेलेबल है, एंड हमें पता है कि एक ब्लेड स्टॉर्म कैन चेंज द कोर्स ऑफ दैट राउंड. वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, एंड बिकॉज ही इज ऑन दैट नाइफ he gave one of his teammate a vandal by. जिस वजह से उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चनिंग है, बट ये राउंड कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, वरना नेक्स्ट राउंड वुड नॉट बी अ बेट, मतलब अच्छा साउंड नहीं करेगा मेडल के लिए, क्योंकि फिर 3 ही राउंड्स बचे रह जाएंगे, एंड आपके पास जब 6 राउंड का लीड हो एंड फिर आप बचे हुए बस 3 राउंड के डिफरेंस के साथ, वो मोमेंटम शिफ्ट होता दिख रहा है आरओजी की तरफ. एक आई थिंक दिस इज अ टेक्निकल पॉज जो अभी लिया गया है. थोड़ी बातें जरूर से करेंगे इस टाइम पे कि क्या गलत हो रहा है. इट्स लेवी हु इज डिस्कनेक्टेड एट दिस मोमेंट. आई थिंक फॉक्स, बैटमैन, वेक्सी, दे वांट टू फिक्स आउट दीस थिंग्स कि हम ऐसे राउंड्स नहीं गवा सकते हैं. वी शुड क्लोज आउट द मैच, क्योंकि ऐसे ही जब राउंड्स निकलते जाते हैं यू आपको फिर पता लगता है एक मिनट 2 मिनट बाद कि 10 स्कोर हो चुका है. उसके बाद इट एंड्स अप ऑन द अदर साइड कि आरओजी एकेडमी शायद ये मैच लेके चले जाए, एंड दैट इज व्हाट वाज नीडेड फ्रॉम आरओजी साइड. आरओजी को फुल मार्क्स उसके लिए कि उन्होंने वो फाइट दिखाया है. लेवी ने आई थिंक वो एस निकाल के ना वो एक मोमेंटम शिफ्ट करा दिया है, एंड दैट इज समटाइम्स नीडेड कि एक प्लेयर स्टेप अप करे और बोले कि या आई एम देयर फॉर माय टीम, एंड फिर आ जाओ साथ में खेलते हैं, निकालते हैं मैच को. Bilkul. I mean, full props to Levi for getting that ace. That was beautiful. That was unexpected. I mean, I would also give minus points for Middle Esports for being a little cheeky. They just went. जो एक basic चीज होती है कि एक करके मत जाओ. But that's what they did around that round and gave up that round. But definitely उस round के बाद एक momentum shift होते हुए दिखा है हमें ROG Academy के तरफ, और मुझे लगता है ROG Academy is probably got it strong right now. They will be going in and getting this round as strong as they did last one as well. And DC rules, we see him with an operator guarding a site. Let's see if he gets that first pick. He is going to be pushing towards mid. He gets flashed by his own teammate. That's sad. बट आई थिंक मिड पे काफी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि मिड कंट्रोल में है यहाँ पे. अगर आप प्रॉपर्ली नोटिस करें, लेवी एंड रूल्स दोनों मिड कंट्रोल होल्ड आउट कर रहे हैं अलोंग विद दैट वाइपर. उनको पता है बी पे भी कोई नहीं है, सो सिर्फ आई थिंक फॉक्स बहुत बैक साइड एरिया से खेल रहे हैं बी की तरफ. ही इज ट्राइंग टू एंकर एट दिस मोमेंट, बट ये एक ए हिट ही होने वाला है एज ही इज होल्डिंग इट आउट. एक स्लो अप्रोच है. आई थिंक लास्ट 30 सेकंड्स में कुछ हमें फास्ट पेस रिवीलिंग एरिया है, बट ये चीज आरओजी को पता है. उनको इतना इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दे जस्ट नीड टू वेट आउट एंड वो एम गोल जीतना पड़ेगा. सामने बस 2 प्लेयर्स के पास वैंडल है एंड ट्रिकी के पास है वो ब्लेड स्टॉर्म. आई सेड कि ट्रिकी को ही यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. स्पाइक प्लांट हो चुका है. फॉक्स ने वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया. मैंने बोला था मेडल के प्लेयर्स कैन बी deadly with these sheriff buys, and a half buy is working, but man, कितना है. लेवी के प्यार है. लेवी बहुत सारे का पट नहीं, अकेले बैटमैन बचे हुए हैं. यहाँ से वैंडल दो और क्लच आउट करना बहुत डिफिकल्ट है. अपने पे तो बैटमैन gets one player down. No, he gets two. It's a 1v1 situation. But no, Levi, he's sticking. No, it's not. Levi has done it. पहले भी वो कर चुके हैं, वो क्या वो करेंगे? बैटमैन वो क्लच आउट करते हैं, वो राउंड पुल ऑफ करते हैं, एंड ये बहुत जरूरी था मेडल के प्लेयर्स के लिए. फॉक्स मेड द डिफरेंस. प्लस ट्रिकी ने भी वहां पे एक इनिशिएट कर दिया, एक पिक निकाल के. 1v3 क्लच बाय बैटमैन.
Bilkul. I mean, that was beautiful to watch. Levi, I mean, he's been very great with his shots, but a 1v3 situation, Batman, all that experience that he has in the game, in pro scene, just works out in this You situation. want to play? He is the Let's one, play. this is the guy you want to be on your side when there is a clutch situation. And with that, we have Easy getting first kill on Levi, that too on mid. So the all right, Fox gets two kills. One Dude, enemy remaining. it looks very bad for RG. They have no vision into the site at all. They just falling out like dominoes. And yep, there we go. Fox gets the third kill on DC Rules. He was all he had to take it all the way from E, but that is what we wanted for medal esports. They knew that अब तक उन्होंने जो starting में try किया कि you know we'll play for picks, we'll go wherever we get the information. That wasn't working out for them. They right now what they are doing, like what they did in the last round on 8, go all together with all the smokes, all the wall, everything together. Worked out for them. It worked out for them in the B side, and I think that is what they are executing this round as well. We are seeing a 5-man push coming in from Medal Esports towards A. We have the wall active. यहाँ पे spam आ तो रहा है. We have okay. Time Jester gets taken down. So Levi right on his feet gets takes down Easy. He does not let him lurk around the side too much. DC Rules, he is getting spotted. But Panzer will be taking down Fox. The Hunter's Fury gets active. तो यहाँ पे एक पोस्ट प्लांट पोजीशनिंग मेडल esports को नहीं करने दे रही है ROG Academy. They just keeping them on their toes, not letting them be comfortable. Levi, what is that taken out by Vexy? Oh, no! ROG push this round in their favor. देखिए मतलब एक सेकंड के लिए लगा कि शायद ये मैच यहीं पे क्लोज आउट हो सकता है, बट द डिफरेंस व्हाट वी लुक एट इट, मतलब विदाउट एनी रिकॉन, विदाउट एनी फ्लैश ही मतलब वो टॉक्सिक स्क्रीन के थ्रू जाते हैं और एलिमिनेट करते हैं. ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, बट आई थिंक गॉड पेप्सी ने जब यहाँ पे प्लेयर बनाया था, आई थॉट कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट जो मिड पुश आया था वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया. एंड आई मीन अभी भी आई थिंक खेल बाकी है. मुझे एक सेकंड के लिए लगा क्या पता मोनेस्ट्री बिफोर द लास्ट राउंड स्टार्टेड कि मुझे फीलिंग आया कि मेडल ई-स्पोर्ट्स हैव गिवन आउट देयर टीममेट्स अ कॉल कि गाइस बहुत हो गया है, बहुत एक्सपेरिमेंटल गेम हो गया, अभी खत्म करते हैं मैच, क्योंकि एक एक करके राउंड कब निकल जाएगा हमें खुद को नहीं पता लगेगा. एंड वंस अगेन इस पास एक पुश आता देखने को मिल रहा है, एंड ये चीज आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट लुक एट रूल्स, ही गेट्स वन, he gets one, but one is enough. Is it enough for his team? ये अभी पता चलेगा कि प्लांट हो रहा है. बट लुक एट एजी, आगे जा चुके हैं. शायद एक अनप्रेडिक्टेबल चीज हो सकता है, बट फॉक्स एजी दोनों ने मिलकर यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है. दो प्लेयर्स फ्लैंक पे हैं. इट इज नैपचेस्टर एंड देयर वाइपर पैंथर. एक 2v4 सिचुएशन राउंड उनको अगर कन्वर्ट करना है, अगर ये मैच उन्हें खत्म नहीं होने देना है, तो ये राउंड करना पड़ेगा. बट नो, लुकिंग एट wrong direction. No, what? Oh my god! Panzer, that is illegal, Panzer. Come on, that is illegal. Okay, we have. He takes down Knife Jester, but Panzer, he's still going on. He gets a third kill. Now it's all up to Easy to take down Spike. No, he knows that he shouldn't be doing, but Easy over here steps on for his team, takes a 4K and the map for his team. That looked very close. I mean, all props to ROG Academy. They did all that they could in the last couple of rounds, especially when they were in defense. But Middle East was just proved themselves to be a better team. But मुझे अब ये भी लगता है अगर और वो जो लीड बनी हुई थी 8-4 की स्टार्टिंग में ही, अगर वो नहीं बनी होती ना, तो दिस कुड हैव इजीली गॉन इन ओवर टाइम. बिकॉज जो हमें कमबैक देखने मिल रहा था आरुषि एकेडमी के से, बहुत ज्यादा हर राउंड काफी ज्यादा क्लोज जा रहा था. आई मीन यहाँ पे सारे गेमर्स हैं, राइट? इफ यू डोंट प्ले इट यू विल गेट प्लेड, राइट? तो यही हुआ यहाँ पे. अगर आप नहीं खेलोगे आप खेल दिए जाओगे, आपको खिला दिया गया है यहाँ पे सिचुएशन में. आई मीन मैं 8-4 की बात नहीं करूंगा, इफ्स एंड बट्स की बात नहीं करूंगा. वो पिछला राउंड डुएबल था, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा उनके फेवर में कन्वर्ट कर दिया था पैंजर एंड नावजेस्टर ने मिलके. बट ठीक है, आई थिंक ये मैच खत्म हो चुका है. इसके बारे में ज्यादा सोच के फायदा नहीं है, अभी नेक्स्ट मैच के बारे में सोचना पड़ेगा.
so they have to focus on the next map. Let's see ये मैप में क्या कर पाते, द सेकंड मैप। तो अभी के लिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार आपके लिए दूसरा मैप लाइव हो जाएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी लोग का फिर से स्वागत करना चाहूंगा आरजी शोडाउन सीरीज व्हिच इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ASUS ROG एंड इंटेल। मेरा नाम है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं मनस्वी एंड हम लोगों ने आज के सेमीफिनाले नंबर 2 के मैप नंबर 1 विटनेस कर चुके हैं जहां पे मेडल स्पोर्ट्स की टीम ने जीत हासिल कर लिया है। इट्स टाइम फॉर फ्रैक्चर। ये सेकंड मैप होगा आज के दिन का, बट अगर ROG एकेडमी आगे जाना चाहते हैं ग्रैंड फाइनल्स में जो कि कल होगा एंड वो 1 लाख रुपए के लिए कंटेस्ट करना चाहते हैं, दे नीड टू विन दिस मैप एंड द नेक्स्ट वन एज वेल। Bilkul. So let's have a look at what exactly went down in the map number 1. That was Breeze. So let's have a look at the scorecard. या स्कोर कार्ड में आई थिंक हमें वो एमवीपी पता लग जाएगा कि कौन बने हैं, प्लस विल गेट टू नो कि किस प्लेयर ने कितने फिनिशेस यहाँ पे सिक्योर करे हैं। अब बेसिकली देखिए, दिस इज जिस्ट कह सकते हैं, सम अप कह सकते हैं ब्रीज पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पे क्या चीजें अभी भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये फ्रैक्चर में बहुत जरूरी है इन टीमों के लिए कि ये चीज को ध्यान में रखें कि ये जो बहुत बड़ा लीड डिफेंसिव हाफ पे सिक्योर कर लिया था मिडिल के प्लेयर्स ने, वो शायद अटैकिंग हाफ पे अगर आरओजी के प्लेयर्स अगर ज्यादा राउंड सिक्योर करते तो शायद से रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बट वही इफ्स एंड बट्स इस गेमिंग की दुनिया में हम सिर्फ कास्टर्स कर सकते हैं या फिर ऑडियंस कर सकता है, गेमर्स नहीं कर सकते जो मैच में खेल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। बट पैंजर ही प्लेड वेल। मुझे तो लगा इनकी टीम के लिए लेवी वाज द एमवीपी फॉर मी, क्योंकि जिस तरीके से वो शॉट्स कनेक्ट कर रहे थे, वो अपनी टीम को सपोर्ट दे रहे थे विद द स्काई वाज इम्पेकेबल, बट स्टिल इट वाज नॉट इनफ मनस्वी। बट एजी, बैडमैन, ट्रिकी फॉक्स, गॉड वेक्सी, जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था मैच शुरू होने से पहले इन द प्री मैच सेशन कि ये टीम ज्यादा सिंक में दिखेंगे, ज्यादा कम्युनिकेशन दिखेगा इनका, एंड दैट हेल्प देम। Bilkul. I mean, Panzer did play very, very beautifully in a couple of rounds, especially the round where he got a double kill. That was amazing. In fact, even Levi and his ace, that was amazing. But Easy, we did see him, shine throughout the first map. And let's see what happens in the map number 2. That is going to be Fracture. Kyuki Fracture is, I think, picked by ROG Academy, if I'm not wrong. Yeah. Uh, so yeah, I mean, अगर खुद के pick में they would actually expect to play better, and this is it. That is do or die for them. If they do not win this map, they are going home with nothing. But the players will be winning this map. If it is Medal Esports, they will be Mhm. securing the spot in the grand finale. Let's have a look about the picks. So we are almost into the map number 2, that is Fracture. As usual, will be seeing Badman with his controller. This time around, DC Rules will be playing his chamber. Levi, हम लोग थोड़ा से aggressive sport में दिखाएंगे देंगे. Race के साथ साथ Vortex God will be getting a Brimstone as well. Panzer again with an initiator, he'll be going in with Breach. Knife Jester completely change career role. Let's see if he actually pans out and takes the Neon, because well, yeah, dual हमने कल duelist setup देखा था, did not actually work, but let's see if it actually works out for ROG Academy in the map of Fracture. आई मीन अकॉर्डिंग टू वीटो Select your मनस्वी, agent. पिछला मैप आरुज का पिक था, ये मैप मेडल का पिक है। तो अगर पिक के हिसाब से जा रहा है तो फिर आई थिंक 2-0 एंड अप हो सकता है। बट आरओजी ये बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। कल भी हम लोगों ने देखा था कि जिसका मैप पिक हो रहा था वो मैप पे उन्होंने जीत हासिल नहीं किया था। डिसाइडर पे जाके डिसाइड हुआ था, जो कि बाइंड का था। आज भी डिसाइडर इज गोइंग टू बी प्लेड ऑन बाइंड, बट आई थिंक मेडल डोंट दे डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि वो चाहेंगे कि यहीं पे क्लोज आउट हो जाए, बिकॉज इट्स देयर पिक एंड काफी अच्छा पिक है। कंट्रोलर देखिए, यहाँ पे ब्रिमस्टोन लिया गया है। काफी लोग कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि वाइपर एंड ब्रिमस्टोन इज अ गुड पिक इन दिस मैप, बट मुझे पर्सनली लगता है ब्रिमस्टोन वर्क्स आउट वेल, क्योंकि आप सिटी साइड से काफी हेल्प कर सकते हैं अपने टीममेट्स को। वाइपर सिर्फ उनका पॉइजन क्लाउड ही आप चेंज कर सकते हैं। वंस द वॉल इज प्लेस्ड यू कैन नॉट टेक आउट द टॉक्सिक स्क्रीन एंड दूसरी साइड पे प्लेस कर सकते हो। सो दैट इज अ थिंग व्हिच इज अब थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है वाइपर के साथ। बट एनीवेज, वाइपर का भी एक अपना ऑरा है, ब्रिमस्टोन का भी एक अलग अपना ऑरा है। उन दोनों का अल्टीमेट्स बहुत डिफरेंटली काम करता है।
एंड आप पोस्ट प्लांट्स खेल सकते हैं विद ब्रिमस्टोन। लेट्स सी, नियॉन पिक लिया गया है दोनों साइड से, बट एक रेस पिक है आरजी अकेडमी के साइड, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव उनको जाना पड़ेगा। बट देयर इज अ सेंटिनल, बट वो जो होल्ड प्ले वाला, स्लो प्ले वाला एक्शन होगा जब डिफेंसिव हाफ पे जाएंगे ये टीम, दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एज मनस्वी सेड। लेट्स सी क्या होता है, कैसे कवर करते हैं। लुक एट इट, रियली स्नैप जेस्चर। Levi, that was kind of sad. I mean, Vexy could have just died to that boom bomb, but did not happen. Panzer has very good angle. Oh my god, but DC rules, he comes into the play, gets a double kill, gets traded out by Vexy. So DC rules, he's got a third kill, he gets the fourth kill as well. The whole of Middle Esports is just eliminated, and that was completely unexpected after the couple of kills that Middle East was actually got in the beginning. जिस तरीके से यहाँ पे push out कर गए थे Levi उन्हीं के साथ साथ उनके teammate, that was kind of sad. I mean, after you lose two players so early in the game, you expect the opponents to have that advantage, but nope. DC rules just eliminating any advantage his teammate, enemies have, and scores the first round for ROG Academy. Looks like a good start for ROG Academy. Let's see if they actually build up on this confidence. I mean, काफी ज्यादा साउंड तो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं मेडल के प्लेयर्स ऑन दिस बी साइड, बट नैव जेस्टर, ओह नो, नैव जेस्टर को पता है यहाँ पे साउंड है। नो 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 नो, कंसेक्यूटिवली 2 बार ये हुआ है नैव जेस्टर के साथ। बट लेवी पुश करेंगे, लेवी का बूम आउट का साउंड जरूर मिलेगा यहाँ पे एजी को, बट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप क्यों इतना पुश करेंगे? सिर्फ एक साउंड के भरोसे जो बी मेन पे आया है फ्रॉम ओपोनेंट साइड, ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। आई एम लिटरली कंफ्यूज कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, बट रूल्स का ये पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ही कैन गो बिग फ्रॉम हियर, बट नो ट्रिकी, एंड ही वाज मार्किंग दैट एंगल। बहुत ज्यादा क्रिस्प, आई थिंक बैंडल भी यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। ये राउंड मुझे लग रहा है इज गोइंग इन फेवर ऑफ मिडल ईस्पोर्ट्स honestly. It's not looking good for ROG Academy. I mean, ROG Academy still have the gunpowder in their hands. They have the Phantom, they have the Spectres. Let's see if it actually works out. Okay, Fox has been spotted. Gets a little bit of damage. Panzer though eliminates Batman. So now it's a 3v4 situation. Look, more doable. Panzer gets middle. Fox easy goes down, but Tricky gets a kill on the Levi. Now it's a 2v2 situation. Oh my god, middle. They almost lost it, but no, we had a Vexy alive and kicking. He is going to secure that round. I mean, what looked like a bad start, this is what we're talking about. What looks like a bad start for a team ends up completely other way. अभी यहाँ पे Middle Esports ने अपने लिए एक round score कर लिया, but that was kind of a sad round for ROG Academy since they had such a good buy in the last round. अपनी guns घुमा दिए, तो अभी well, they have to stick to just classics and maybe a couple of other pistols. I think अभी ये राउंड कैसे पैन आउट करता है फॉर मेडल, लेट्स सी। मेडल थोड़ा सा ज्यादा, आई थिंक दे आर मेकिंग सम नॉइजेस टुवर्ड्स द डिश एरिया, बट कहीं पे भी अभी तक कमिट नहीं किया है उन्होंने। अगर बी साइड की बात करें, इस टाइम पे 3 प्लेयर्स हैं ROG एकेडमी के लिए। देयर इज नियॉन, रेज एंड ब्रीच, बट वेक्सी एंड एजी देखिए होल्ड कर रहे हैं। उन्होंने बी पे अभी कोई मूवमेंट नहीं दिया है। वो एक्चुअली दे आर कमिंग टुवर्ड्स बी ओनली, एंड यहाँ पे फ्लैश यूज किया गया है एंड नियॉन इज रशिंग टू दैट एंगल। नियॉन ओह ट्रिकी यहाँ पे टेक आउट करेंगे, लेवी को इजी एंट्रीज मिलेंगी क्योंकि उनके पास स्पाइस नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इजीली साइड कंट्रोल मिल चुका है, स्पाइक प्लांट भी हो जाएगा। रूल्स उनके पास हेड हंटर है, बट कितना ज्यादा यहाँ पे आउटकम निकाल पाएंगे इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चनेबल पॉइंट। वॉल आउट किया गया है कैंटीन एरिया को, तो को इतना इजी एंट्री नहीं मिलेगा। ओह किस कनेक्ट का है, थिंक कर दिया उन्होंने, बट वोर्टेक्स उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बट लुक एट ट्रिक, वो ऑलरेडी कर चुके हैं एंड रूल्स वन किल, एक बुलेट है उनके पास। कैन ही फाइंड वन मोर? नो, ही गेट्स टेकन डाउन बाय फॉक्स एंड एक 2-1 का स्कोर लाइन हमें देखने को मिल रहा है।
Of course, I mean, Middle East was this was last round was quite an easy round for them, definitely. बहुत easily उन्होंने side secure कर ली थी. They also scored a very, I mean, they just lost, I think, tricky. So again, not a very bad round for them. Well, in fact, actually a good round because they scored the round for themselves. Now RG Academy back to having an economy enough to have a bye. So this round should be huge for them. This round they have to make it work for themselves. All the utilities have been used. Tricky tries to get in the side, get information, but smokes out. He knows for the fact that the side is up for grab. He gets in, and yeah, that should be a very easy plant. Yeah, it will be, Spike but planted. retake के लिए आप देखिए utilities कितने हैं. They have the reach flashpoint. They have the sun and God Bexy ने यहाँ पे dodge out कर दिया है, but no one again he gets to, oh no. Bexy का backup यहाँ पे बहुत बढ़िया. Actually Bexy का Fox का backup बहुत बढ़िया था. I mean यहाँ पे Badman के पास उसका rolling thunder भी available है, so I don't think rolling thunder का requirement भी यहाँ पे होगा, but Vortex he gets two. Vortex suddenly is making it possible. Badman can he get that player down? One enemy remaining. Jules को भी eliminate करेंगे Bexy के साथ. Bexy ने actually राउंड में 3 picks निकाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए राउंड विनिंग परफॉर्मेंस था. जिस तरीके से उन्होंने फ्लैश डॉज किया, पहले तो उन्होंने नियॉन को टर्न किया, फिर he takes down the race. But I don't know the point कि यहाँ पे मेडल के प्लेयर्स जो डिश की तरफ फाइट करने गए थे, was that required or not? आप थोड़ा कभी-कभी आप देखोगे मेडल के प्लेयर्स को कभी-कभी ओवर कमिट कर जाते हैं, जिस वजह से उनको पनिश किया जाता है. And they need to fix that. Otherwise, I think this team currently in this match, I don't think कोई problem दिख रहा है उनकी टीम में. They can easily win this game. बिल्कुल. और आपने सही कहा. काफी गॉड वेक्सी की तरफ से जो वो 3 किल्स आए वो काफी ज्यादा क्रूशल थे. एंड वी आर एक्चुअली सीइंग, वेट, व्हाट आर वी सीइंग? I'm confused. The whole of ROG Academy is moving towards B. We have only Vortex Flanking, maybe coming actually. back to A site, and yep, there we go. Tricky gets a substantial amount of damage, but Vortex, come on, he gets a headshot over Ezzy. And now the whole of Middle East Sports is aware of the fact that the push is towards B side, A side. No. Oh, that orbital No, strike not is Chester. going to fly away. Middle East Sports very easily. Spike planted. I mean, ये बहुत अच्छा execution हो सकता था, but I think, oh no, Batman will survive that. ये smoke off करके बहुत difficult हो रहा है. They are holding it out. Utilities कितने ज़्यादा है देखिए. Still देखिए अभी तक side में entry नहीं मिली है. These guys are fighting it out. Oh no, Levy एक pick निकालेंगे. One enemy Panther यहाँ पे remaining. eliminate करते हैं, but अकेले है सिर्फ. One versus Last situation player and standing. he makes it a 1v1. Panzer. Oh. Come on, Panzer. एक open plant है. He I doesn't mean, need that to peek. Fox doesn't need to peek. Yeah, he doesn't need to peek. He knows, but उनके पास HP भी नहीं था. Peek करके he eliminates that player and secures that round. मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे लगा शायद से ये round execution possible है from ROG side, क्योंकि उनके ब्रीच के साइड से भी ultimate commitment आया. Plus Brimstone ने भी plant नहीं करने दिया by using that orbital strike, but साइड एंट्री नहीं मिला उन्हें. वो स्मोक करके ब्लॉक कर दिया पूरा एरिया वहां पे पैडमैन ने. Look at them, they are predicting this push, I guess. Oh, no. I mean, last round they were just doing that somehow, and yep, there we go. Oh my God! Standing. Spike Levi, down B. come on, nice, just a Levi. Both of the duelists pushing towards B, getting 4 kills quite easily. The spike is down. Batman all by himself, but not okay. Batman gets a double kill. See, this is what we're talking about. If there's a clutch round, we want Batman to be the one who's alive. He is, though, getting pushed by both the angles and DC rules. The moment he sees a single pixel, oh no! DC rules misses this out. He knows for the fact Batman knows that there is no going back. If he has to commit, he has to commit towards B. He gets into the site, and maybe this plant is happening. Yep, he is going to get away with that plant, but Panzer, I don't think he's going to let this. Yep.
Pans are not letting Batman get away with more than just a point and a couple of kills. So a round for ROG Academy, a beautiful start, but well, I mean, if only Batman had a little bit of backup, this round could have been possible for them. आई मीन बैकअप की भी जरूरत नहीं था यहाँ पे मनस्वी, बिकॉज टाइम था बैटमैन के पास। अगर बैटमैन थोड़ा टाइम लेते, बैटमैन वाज लाइक ठीक है स्मोक करता हूँ, प्लांट करता हूँ, फिर देखा जाएगा। बट आई थिंक इट वाज अ गुड राउंड फॉर बोथ द टीम्स, स्पेशली फॉर आरओजी एकेडमी कि उन्होंने अल्टीमेट यहाँ पे यूज किया। रेज हैड हिज शो स्टॉपर, उसका वैल्यू मिला उन्हें, एंड नैव जस्टर फाइनली पुश करके उन्हें कुछ वैल्यू मिला। नहीं तो पिछले 2-3 राउंड से जितनी बार उन्होंने पुश किया उनको इमीडिएट शटडाउन किया गया है। लुक एट ट्रिकी, लुक एट ट्रिकी, लुक एट दिस एंट्री। सीधा साइड में एंट्री मिल चुका है उनको, एंड नो वन इज प्लेइंग इनसाइड। सब लोग या तो कैंटीन एरिया पे खेल रहे हैं या तो आर्केड पे खेल रहे हैं, बट एजी बोट इसको एलिमिनेट करते हैं। बट अभी तक वो हेवन कंट्रोल मिला नहीं है। लेवी एंड नैव जस्टर दोनों यहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एजी ही हैज toward the fourth in his hand, toward the fourth, but got Vexy. No, got Vexy looking at a long angle. Levy. This is all happening. This is all happening. Levy, can Levy get Oh, down? kill Levy Levi. gets that kill. Okay, Levi. I mean, it for Fox it was death anyhow. He was stuck between a rock and a hard place. And oh, Daisy rolls. He has no clue. This Tricky was so close. Tricky gets the second kill on Levi as well and scores the round for Medal Esports. I mean, RG Academy. Still looking strong, but it's just like they're making small mistake, which is costing them the whole round. So let's hope they catch up on it soon, so that they are actually in a point where they can actually make a comeback, because Metal Esports right now has just 3 rounds in the lead, which is quite doable. Seeing that ROG Academy, we have Levi playing so well, we have Panzer playing so well. I mean, ये push को रोक पाना बहुत difficult होगा, but Vortex ready, he was prepared, but गलत direction में देख रही हूँ, expecting that player, but Right here. यहाँ पे snap gesture, I mean, he has that override active, but Batman ने भी commit नहीं किया। Batman को पता है कि कितना deadly हो सकता है वो Neon का ultimate, but Levi, this guy can do damage, serious damage. साइड कंट्रोल मिल चुका है बी पे प्लांट हो सकता है। बैटमैन यहाँ पे नैव जस्टर को एलिमिनेट कर देंगे, बट लीवाई क्या स्मोक थ्रू वॉक इन करेंगे? आई मीन ही कैन डू दैट, ही डिड इट एक्चुअली। रूल्स यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके एक प्लेयर को, बट आई डोंट थिंक ही वुड एक्सपेक्ट। और वेक्सी बहुत ही ज्यादा चीकी एंगल खेल रहे थे, बहुत क्लोज एंगल खेल रहे थे, और वेक्सी पुशन कर चुके कैंटीन से। एंड आई मीन बैटमैन को देखिए, उनके पास ऑर्बिटल स्ट्राइक है, तो ही इज प्लेइंग अ पोस्ट सिचुएशन। फॉक्स एलिमिनेट करेंगे बड़े आसानी से, एंड और व्यक्ति भी एक दूसरा पिक निकाल लेंगे, एंड एक और राउंड बड़े आसानी से सिक्योर कर लिया। बट एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये शायद से राउंड आरओजी एकेडमी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फेवर में। Bilkul. Every round, that's what we're talking about. Every round has been so close for ROG Academy. They're just missing out on some points, and this, let's just hope that this timeout actually helps them out to talk amongst themselves, get those tactics right, get those strategies right, and overall. But if you see Medal Esports, अब तक काफी खूबसूरत तरीके से वो अपनी जो साइट है वो स्कोर कर पा रहे, ये काफी इजीली एक्चुअली उन्हें एंट्री मिल रही है। इट्स जस्ट द स्ट्रगल फॉर देम इज द पोस्ट प्लांट पोजीशंस, बिकॉज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटीज जो आरओजी एकेडमी एंड तक बचा के रखती है, वो काफी अच्छी की तरीके से प्रेशर बना पाती है मिडल ई स्पोर्ट्स ऑन द रीटेक टाइम। बट थोड़ी बस 2-3 चीजें जो मिस आउट हो जाती है, जस्ट यू नो एम डुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से मे बी यहाँ पे मिस आउट कर रही है आरओजी एकेडमी। बट आई स्टिल थिंक दे हैव अ चांस टू कीप going, and Medal Esports though, they have 4 ultimates online right now, so well, they look very strong. He's probably going with that operator this round, and overall, but the only problem I see from RG Academy so far is Naive Jester. He is,
dashing away and getting that information, but he always loses his life the moment he dashes into some place, some angles. In fact, we saw that in the first couple of rounds that he has been doing that. And if you see, on the other hand, Tricky, he has been utilizing those stunts pretty well from Neon. Yeah, I mean, अभी आप देखें मिडिल के पास 4 अल्टीमेट्स एक्टिव हैं, ऑर्बिटल स्ट्राइक, ओवरराइड, रेजरेक्शन एंड द रोलिंग थंडर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर आरओजी एकेडमी कि ये राउंड अगर उन्हें कन्वर्ट करना है तो उन्हें पिक्स निकालना पड़ेगा, वरना आई थिंक अगर फिर से इजीली साइड दे दिया, एंड दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर आरओजी कि उन्होंने, अगर आपने देखा होगा अभी तक जो 6 राउंड्स यहाँ पे विक्ट्री निकाला है मेडल ने, उन्होंने हर बार एवरी टाइम उन्होंने प्लांट सिक्योर किया है, और बहुत अर्ली इन द राउंड, राइट, जब आपको ज्यादा यूटिलिटीज यूज करे बिना प्लांट मिले, क्योंकि साइट ही वो लोग छोड़ रहे हैं, राइट। अगर आप देखिए लास्ट टाइम हमने देखा पूरा बी साइड खाली था, दे गॉट द साइड वेरी इजीली। ठीक है, मान सकते हैं कि इस बार बहुत क्लोज एंगल होल्ड कर रहे हैं नापचेस्टर, बट इस बार आप देखिए उस एंगल पे गए हैं ट्रिकी, ट्रिकी हैज लिटरली पुश्ड इन and this can make a difference. You will not kill my allies. My goodness, सीधा वहाँ पे आए हैं, he gets that override active as well. शॉटगन के साथ वेट कर रहे थे रूल्स, बट आई मीन साइड कंट्रोल फिर से मिल चुका है। Look at them, look at AZ, वो किस तरफ से प्लान कर रहे हैं। I don't know rules will check it that angle or not, they are not checking that angle. साइड कंट्रोल मिल चुका है, प्लान हो चुका है, बैटमैन के पास मौका है यहाँ पे पोस्ट प्लान खेलने का। Godvex is holding a very cheeky angle along with Fox. Oh no, 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 no! Fire करके Godvex ने वहाँ पे I think should have waited. But around it is not over. One and two. Last player Thunder standing. versus AZ, but AZ के पास सिर्फ 20 HP है। Operator pick किया AZ ने, he's showing that confidence. In fact, he put up. Come on. Oh, is AZ surviving? My God! Oh no! Panzer is not even gonna save that gun. My God! Oh no! Teleport's ready. That was actually a good round coming in from Panzer. मतलब काफी खूबसूरत उन्होंने couple of kills लिए थे. In fact 3K काफी अच्छी तरीके से लिए थे. वो भी काफी crucial kills लिए थे. But the only problem that he did not have enough time to defuse the spike. In fact अगर वो push करने की जगह पे he would have went in for a defuse or at least a half defuse. That would have worked out for him. But yeah, like you said, ifs and buts. They just don't work in these games. This. I mean, फिर से एक और easy plant मिला उन्हें। साइड पूरा कंट्रोल में लिया था मेडल के प्लेयर्स ने। Take this. फिर से again अगर आप देखें ए साइड पे कोई क्लोज खेल ही नहीं रहा है। No one is there to block Tricky out. No one is there to block Eddie out. They have got the side control now. Brimstone के smoke के through you cannot push like this, right? Without any utilities. फिर से उन्हें एक ओपन प्लान करने का मौका मिल चुका है, एंड दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर आरओजी। दे हैव टू स्टॉप दिस फ्लो। ये फ्लो अगर स्टॉप नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा। अभी भी देखिए ऑर्बिटल स्ट्राइक है, दे कैन स्टिल ब्लॉक इट आउट। अच्छी फाइट ही नहीं है, ऑर्बिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल हो जाएगा। नो वन ट्रिकी थोड़ा ज्यादा ही एम्बिशियस हो गए मुझे लग रहा है। He's still alive, he's still alive. As he rules and No! Cannot. I mean, Tricky थोड़ा ज़्यादा ही ambitious हो गए मुझे लग रहा है। Orbital strike के through घुस गए, मतलब I mean Tricky थोड़े Tricky, से we मतलब know Neon is लालच हो fast, but I know well, Neon is fast, yeah, but not that लालच fast. लालच बुरी भला। बिल्कुल बिल्कुल. So yeah, I mean, ROG Academy, what are you guys doing? Medal Esports knows for the fact that Site A is completely up for the grabs. They just go in, they plant, and they are actually doing those holding on to those post plant positions pretty well. There is nothing that ROG Academy has been doing so far that is actually working out for them. Finally. Look at that! Finally, Spike Levi down gets a B. kill on Tricky, the first person to actually get inside the site. Knife just takes down SE. So two of the key players from Middle Esports are already down. It's a 2v4 situation. Badman though, he's still alive and kicking. We have Godvexy as well.
So let's see if these guys can make it happen. I mean, A side उनसे काफी अच्छे तरीके से easily score हो रही थी. I don't know why try to fix what's not broken. But anywho, we have now three players stacking towards B side anyhow, and we also have one of the players watching the flank. So yeah, looks like One Middle enemy Esports in a remaining. bad position. Levi gets Spike that first kill down on B. God. Vexi gets that Let's go second, get it. actually third one on Badman as well. No entry for Middle Esports into the Last side this round before round. the They switch. finally score a round for themselves after a huge gap. ROG Academy on a 3 to 8 score line. It still looks like a far cry or like a far dream, but will they be able to make this comeback in the second half? They just have one more round in this half. They need to score this, or else it's just one more round to stress about in the second half. You Yeah, want to play? Let's I play. mean, क्योंकि फिर से बार बार वो हाई गियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, Go, go, go. उनके पास उनका खुद का फास्ट लेन यूज किया, फिर से देखिए कैंटीन पे पुश हो चुका है. He's inside their spawn. This is actually, is this fair कि प्लेयर्स जो अटैकर्स है वो स्पॉन से आ रहे हैं एंड अटैकर साइड पे, ओ माय गॉड, डिफेंड, वेयर आर द प्लेयर्स? तो साइड पे आ रहे हैं. ट्रिकी गेट्स वन, वोर्टेक्स गॉड को एलिमिनेट कर चुके हैं, स्मोक आउट किया जा चुका है. ये रीड नहीं कर पा रहे हैं आरओजी के प्लेयर्स. कहां कहां से पुश आ रहा है आप देख सकते हैं. लिटरली दे आर कमिंग इन देयर स्पॉन. वहां से जाके साइड कंट्रोल लेके जा रहे हैं. बैटमैन ने नैप जस्ट बहुत सारा डैमेज पहुंचा दिया है, बट नो, ही कैन गेट द सेकंड एज वेल. बट ट्रिकी ऑलरेडी वहां पे थे बैकअप लेने के लिए. Last Handle. player Oh, standing. Tricky. My goodness. I'm out of here. आई थिंक यहाँ पे बैरियर ऑफ का भी इस्तेमाल हो चुका है. एंड यस, ड्रॉप. नो ट्रिकी, नो ट्रिकी, नो ट्रिकी को नहीं मिला एक्चुअली. फॉक्स, Tricky. कंप्लीटिंग. You know what? Tricky actually wanted to run inside the A main, but his teammate is like, "No, Tricky, just cool down. I'm gonna wall that off, and there's no more kills for you." But Tricky is still taking those angles, trying to jump over the kill. I mean, so maybe just a death match में how we run and gun. That is what Tricky is doing at this point, and there's just no stopping to him. It's just एक्चुअली unfair towards ROG. I'm out of here. राइट. उधर रन एंड गन में यू नीड टू स्प्रे, बट इधर तो ट्रिकी हैज बीन रन एंड टैपिंग. तो Exactly. वो टैप्स बहुत बहुत ज्यादा प्रिसाइज क्रिएट कर रहे हैं. बट आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस स्कोर लाइन. 9-3 में कुछ तो हो जाता है. आई एम श्योर यहाँ पे मेडल ई स्पोर्ट्स नहीं चाहेंगे कि कोई 9-3 कर्स उनकी तरफ लगे. एंड आरओजी के प्लेयर्स दे नीड दैट कर्स, बिकॉज कि ये मेडल ई स्पोर्ट्स की टीम ये मैप ना जीता. अगर जीत जाते हैं इट विल बी ऑल डन एंड डस्टेड, क्योंकि फिर कमबैक नहीं कर पाएंगे. Okay, I mean that was a little strange. He has a shorty ready for himself. He also has a frenzy in his hands. Okay, he's just too ready for that push to be coming in. And right now, we are actually not sure what ROG Academy is trying to do. They just spread out a little bit. They are trying to take those peaks. They're trying to gain some information. We've actually seen the spike go towards B side, and on the B side we just have two players to take care of. The first contact that we made on B main already. Tricky यहाँ पे आवाज सुन लिए. He knows for the fact that he might just get killed. What? Oh no! Really? Tricky, come on. He had the first pick. He had all the information that he needed. He just missed out on that, but nope. Fox is going to punish Knife Jester for that fast 30 lane. seconds And Badman, he knows that the push might be just coming towards A side, might be just coming towards the dish area. So वहाँ पे spam कर देंगे, वहाँ पे smoke कर देंगे, and they're going to drive RG Academy back towards B side, जहाँ पे भी Middle Esports not slow. The Middle Esports is right here to make sure that the site is not given up easily. But we have Panzer. He takes down Batman and easy single-handedly Spike gets that No. spike down. Levi, What? Levi, come Last on! player standing. What is it seriously happening, मनस्वी? मतलब ये राउंड कैसे हार सकते हैं मेटल के प्लेयर्स? आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड. बस 8 सेकंड था ऑन द क्लॉक. दे जस्ट नीडेड टू गेट दैट स्पाइक प्लेयर डाउन. वहां पे इतने सारे प्लेयर्स डाउन हो जाते हैं. इट्स अ 1v3 सिचुएशन. स्पाइक हैज गॉट planted.
no, Tanzan ने spot out कर लिया है. Levi gets that kill. I mean, ROG Academy was not in business, but credits to Tricky. I mean, Tricky, what was this? I mean, Tricky will regret this. Yeah. Tricky, yeah, that's not पूरा मैच spammable, वन टैप sadly. करके उन्होंने पिस्टल राउंड में प्लेयर को शॉट्स मिस किए. Uh, Bilkul. And that yeah, happens. a round for the first round in the second half for ROG Academy. Looks like they will have enough money for Vortex to have a Vandal in his hand. Spencer has Bulldog. So yeah, they look strong in the beginning. Uh, we have a three-man stack towards B, and look at that. They're actually, easy. It's trying to be cheeky, takes is trying to take those shots. He actually spots DC rules दो बार उनको ये down कर देंगे, not down but yep, What? pretty low. Knife just gets the first kill, but Fox, how is he allowed to do that? I mean, yeah, Fox, he Levi though, he gets a kill on Badman being punished for that push. I mean, that push was kind of unnecessary since he had no backup anyway. No, he's pushing the wrong direction. I mean, दोनों players तैयार है. No. Oh, ठीक है. At least he got one guy. It's a 2v3 situation. Vandals अभी भी intact हैं. Bulldogs अभी भी intact हैं. But Godvexy will get that ultimate orb. Expector भी है उनके पास. And Ezzy is coming Spike back. But planted. Ezzy के पास HP नहीं है. And 2 bullets है उनके headhunter में. Healing you. Okay. I mean, HP at least recover हो चुका है. Credits to Godvexy. But is this retake possible? उनके पास ये shot has to be connected. Let's see क्या ये shot connect हो सकता है. I mean, Spectre है, but Vortex takes Vexy down and rules यहाँ पे Ezzy को take down कर लेंगे. Easy round secure हो चुका है for ROG Academy. The best part was कि ROG Academy ने unnecessary push नहीं किया कहीं पे भी. उन्होंने wait किया. उन्होंने रीड आउट किया कि मेडल के प्लेयर्स पुश करेंगे एंड उन्हें पनिश किया एंड जिसका फायदा उन्हें ये राउंड से मिला. Bilkul, a very good round coming in from ROG Academy. They finally are closing in that space, that huge scoreline space that they had with Medal Esports. At Medal Esports right now, they finally have a good buy in their hands. So, abhi kaate ki takkar hone wali hai. DC Rules, he is expecting a push from Easy coming in towards B side. But oh, What? Tricky! You're not going to get away with that anymore. Now you just make sure to take him down. Now God Vexy and his team know for the fact that this may be an A execute, but nope, not happening. They are actually even making pressure towards B side. Easy is still around the corner, making sure that there is nobody coming in. Oh, gets Close. spotted. DC Rules gets kill on God Vexy right on time. Easy. Oh, थोड़ा late हो गई was flash because live just could have been saved No! because of that. Oh, Levi Easy. manages to take Easy down. And well, a 2v4 situation looks good for ROG Academy. Fox, he has all the utilities in his hands. He takes down DC Rules, but Badman will be going down as well. A 1v3 situation. Let's see if Fox manages to do that with just half his HP. I mean, काफी गलतियां करी है मेडल ने इस राउंड में. ट्रिकी बहुत अग्रेसिव एंगल खेल रहे थे एंड वो नियॉन का जो हाई गियर है उससे स्टन हो जाते हैं एंड देन ही कुडंट कन्वर्ट इट. वो टेक्स को एलिमिनेट किया जाएगा. 6-9 का स्कोर लाइन फॉर ROG Academy. 3 राउंड का डिफरेंस फिर से यहाँ पे कवर आउट करना पड़ेगा. बट मेडल दे नीड टू नो कि ऐसे राउंड्स निकलते जा रहे हैं एंड उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे सडनली. दे वोंट नो इट कि जो अच्छा लीड उन्होंने कन्वर्ट किया था वो शायद गवा भी सकते हैं. अब ये राउंड में अगर आप नोटिस करें मनस्वी, दे डोंट हैव बाइज. उनके पास ओके दे आर बाइंग वन स्पेक्ट. ओके नो, दे आर गोइंग फॉर शेरिफ बाय ओनली. सबने शेरिफ ही बाय किया है. मे बी कुछ यहाँ पे ट्राई करेंगे. वो बी स्टैक कर रहे हैं. रूल्स बैटमैन को एलिमिनेट Oh, करेंगे. DC 1 सेकंड. Rules. ये पुश
शायद You से sh- काम नहीं कर रहा है. so we've actually been seeing this DC rules and easy. They always contest this area, always every round, and usually, uh, yep, the vortex. Come on, Tricky, you're not going to get away with those pushes. Two players down from Middle Esports already. They already are losing out on firepower. Now the man advantage has been given to ROG Academy. DC Rules takes down God Vexy as well. DC Rules finally coming back in that groove with his operator that he is actually known for now. Metal Fox, he is pushing in towards A side all alone, and the whole of RG Academy will be here to actually welcome him. Spike planted. Middle Esports won't be able to do much. Spike has been planted. Oh, that incendiary. Oh, he almost loses his life. या Last player हाँ, standing. सब उसी डायरेक्शन में एम करके बैठे हुए हैं. आई थिंक फॉक्स Flawless. he will be taken out as well. But I don't know, ये चीज मैंने कल भी प्लेयर से करते हुए देखा था. ये इंडिविजुअल पुशेस का सिनेरियो मुझे समझ नहीं आता है. एंड जब आप वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, इट लुक्स वेरी अगली. एंड वही हो रहा है कंटिन्यूअसली 3-4 राउंड से विद मेडल स्पोर्ट्स. या एक काफी सही टाइम आउट लिया गया है बिकॉज दे नो कि आरओजी के प्लेयर यहाँ पे राउंड सिक्योर कर रहे हैं. एंड जो 9-3 से शुरू हुआ था राउंड स्विच, वो सडनली बहुत डुएबल लग रहा है. एंड ऐसा लग रहा है कि कमबैक हो चुका है ऑलमोस्ट. बस 2 राउंड का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है आरओजी एकेडमी एंड मेडल स्पोर्ट्स के बीच में. एंड ये जो इंडिविजुअल पुश करके बस कोई वैल्यू नहीं निकल रहा है, आप बस ओपोनेंट के क्रॉसफायर में जाके एलिमिनेट हो रहे हैं या फिर मर रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है. चाहे वो इको राउंड हो या फिर चाहे वो बाय राउंड हो. यू नीड टू बी पेशेंट. या तो अगर आप पुश कर रहे हो तो आप साथ में किसी को लेके जाइए ताकि एटलीस्ट आप कुछ कॉम्बिनेशन बना सके, प्रेशर क्रिएट कर सके जो अटैकिंग हाफ पे वो खुद पुश कर रहे हैं. क्योंकि नियॉन के साथ हमने देखा था कि मेटल के प्लेयर ट्रिकी ने कितना आसानी से साइड कंट्रोल किया था, लाइक साइड में एंट्री दिलाया था. एंड वही सिमिलर चीज यहाँ पे आई मीन नैव जेस्टर भी कर रहे हैं. Yeah, I mean, Knife Jester has been working pretty well as Neon in the attacking side. Now, Tricky, he knows for the fact कि Knife Jester ने थोड़े mistakes करे थे. That was indeed pushing in towards the side. He knows for the fact कि Neon is a very fast agent. You might get inside the side, but your teammates will need some time to catch up. And Look at them. he's been losing out on that. Now, while we're talking about that, Easy gets taken down right away by. So this is the angle that's we're talking about. Easy always tried to take that first pick, but has been failing for last 4 rounds consecutively, and is being the whole team has been punished for that. Now, God Vexy holding on to the cheeky angle. He knows for the fact push might just be in order towards the arcade. He is going to wall it off, try to buy some time for his teammates to rotate and maybe give him some backup. और यहाँ पे लीवाई यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी एंगल्स निकालने की कोशिश करे. गॉड वैक्सी हैज नो क्लू कि उनके लिटरली सर के ऊपर ही वो खड़े रहेंगे. ऑन द अदर साइड ऑफ द मैप वी अ रोलिंग थंडर. ट्रिकी विल बी टेकन डाउन बाय नाइफ जस्ट come on. Last player standing. Oh, Spike down Oh! B. Levi gets taken down, but not before he trades himself out somehow with that. And God Vortex, Vortex God, he will be putting the spike down. Metal Fox using all the utilities possible. Wow! He gets that kill on Vortex One God. enemy No! remaining. What? DC He can Rose. hit the spike very easily. He's here. He's here. Let's see if Fox Why? will be able to take him down. Both of these players are actually Oh, pretty low at Fox. Fox. A 3K, and will be defusing the spike as well. So finally a round for Medal Esports. What exactly went wrong with ROG Academy this round? Because they What? looked I like think they were everything in went wrong pretty for good. them. Oh my god. I mean, God Vexy and Fox ने दोनों ने मिलके 5 लोगों को एलिमिनेट कर दिया. They were actually मतलब I mean नैव जेस्टर ठीक है वो फ्लैंक पे आ रहे थे, but वो जो आफ्टर शॉक एंड फ्लैश का टाइमिंग था that was impeccable.
उससे एक पिक उनको मिल गया। ऑपरेटर शॉट वहां पे मिस किया चेंबर ने फ्रॉम आरजी साइड, उसका फायदा मिला। जो टीपी हुआ, टीपी भी एकदम प्लेयर आई थिंक फॉक्स के सामने किया उन्होंने। उसके बाद साइड में इट वेंट, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग फॉर आरओजी देयर। सब कुछ सही किया उन्होंने, बट वेक्सी का वो ऑकवर्ड पोजीशनिंग वॉल के साथ, उधर उन्होंने 2 पिक निकाल के थोड़ा बहुत होप दिया एंड फॉक्स डिड द रेस्ट। राइट, ऐसा ही राउंड रिक्वायर्ड था मेडल के लिए मनस्वी, बिकॉज वो मोमेंटम शिफ्ट होता हमने देखा। एंड आई मीन अभी सडनली मेडल थोड़ा सा कंफर्टेबल स्पेस पे होंगे, बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अभी भी नहीं फील कर सकते। आप देखिए यहाँ पे ओवरड्राइव एक्टिव कर सकते हैं, देयर इज अ टूर दे फोर्स एक्टिव अवेलेबल फॉर चेंबर एज वेल, एंड एक ऑर्बिटल स्ट्राइक भी है। तो अगर प्लांट हो जाता है तो पोस्ट प्लांट के लिए काफी सारे सिचुएशन है, एंड एंट्री दिलाने के लिए ओवरड्राइव से बेहतर आई डोंट थिंक देयर इज एन अल्टीमेट देयर। Bilkul. I mean, ROG Academy, they've had this time out. I hope they had this time to actually look back on the mistakes that they made last round, because usse pehle they have been doing so well. They were making such a good comeback, and still, I mean, let's say कि इतनी ज़्यादा भी lead नहीं है Middle Esports के साथ. They've just gotten one round in this whole half, so I think they are gaining back their confidence. But easy over here, maybe soon contesting an operator against DC Rules, who's been looking pretty good with that operator. No, easy, Ooh, no. no easy. You cannot miss out on this stuff. DC Rules. Oh my God! Look at him. He's been. Yep. There comes the rolling thunder. There will be some kills coming in order, and DC Rules gets taken down, but Levi just in time to get God Vexy down. So ROG Academy, they are inside. They are inside, but I think they just want to rotate. Yep, that's what Yep, they they are are gonna rotating. do. They will be rotating towards A, because I think Knife Juster is already there. He has given out a call. Key site seems to be pretty empty. You can just come in and 30 seconds yeah, left. we can make this happen. Yeah, but Fox is ready. I mean, but Fox अगर ऑफ गार्ड यहाँ पे पकड़े जाते हैं बाय नाइफ जेस्टर, which he win? Yes, Yeah, but tricky. Oh, tricky. Ricky. दोनों प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके। सडनली ये राउंड डुएबल लग रहा है। आरओजी एकेडमी के नियॉन के पास भी यहाँ पे ओवरड्राइव है, एंड ट्रिकी आल्सो हैज इट, बट दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दे डोंट नो द पोजीशनिंग। ओके ओके, वो कमिट करवाया गया है। एंड सैंड्स की तरफ आप देखिए, बैटमैन भी घुस चुके हैं। बैटमैन नोज वन, एक प्लेयर का पोजीशनिंग। ओह नो 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 नो, ट्रिकी जस्ट दैट। ओह माय गॉड, इज इट रियली Bad हैपनिंग? man. What a retake! Brilliantly done by Medley Sports. Oh, I mean, that's what you call the big brains. Badman just knew that he has to somehow bait out those utils, bait out those positions from ROG, and that's what they exactly did. And did made that retake happen for themselves. Now finally Middle Esports looking to be in a good place. I mean, मनस्वी, एक सवाल है मेरा। I mean, अब काफी सारे राउंड हो गए हैं अटैकिंग हाफ पे, डिफेंसिव हाफ पे फॉर मेडली स्पोर्ट्स। इजी इज taking some forceful fights which is not required, right? I mean, this position is also not required from Izzy, because अगर rules यहाँ पे shot connect करते हैं, he will immediately be eliminated, क्योंकि यहाँ पे tour de force active है। We know what tour de force can do. God Bexy इस बार नाइफ जेस्टर को एलिमिनेट करेंगे। बहुत ही छोटा सा एंगल था with that smoke, and he connects that shot and he eliminates that guy. But you know, आपको क्या लग रहा है कि ऐसी थोड़ा forceful fight ज्यादा ले रहे हैं? Bilkul. I mean, look at the way Levi just spammed into the smoke, because they know for the fact they have made a read on his gameplay. He has been pushing that angle every round in this half, and जिसके लिए अभी भी अगर this particular round अगर वो back off नहीं करते, he could have easily gotten caught off in that spray from the smoke. Now Levi, oh my God, Levi. He gets taken down, but Panzer and DC Rules right on the back. They managed to take down a couple of kills. Now the man advantage is towards ROG Academy. Now, as we were talking about,
Spike planted. Mr. Tricky, he is still on the run. He will be actually entering towards canteen. He has his teammate right by his side. Fox will be giving out that flash and stun so that Tricky can make his entry into the site. Though DC Rule actually spots out Tricky, Last that player standing. Flash was right on time. Vortex takes down Fox. Now it's all up to Tricky to make this happen. A 1v3 situation not happening because DC Rules has that operator in his hands. And that would be the end of the round number 19. Come on. RG Academy scoring one more round जो Medal Esports को momentum बिल्कुल नहीं बनाने देंगी. They like, okay, we made some mistakes. You cashed out on that. But here is where we put a stop to it. या आई मीन Need a drop. अगर आपने गॉड वेक्सी का No, no, पोजीशनिंग भी देखा thanks. होगा पिछले फाइट में, ही वाज कॉट ऑफ गार्ड, मतलब नो मैन्स लैंड में खेल रहे हैं. ऑफ कोर्स अगर वो ब्लीच का फ्लैश आया भी, आप इतनी फास्ट डॉज नहीं कर सकते हो. दे आर पुशिंग विद टू प्लेयर्स. एजी वंस अगेन ही predicts it right, but Batman, he connects snap jester. Can he get one more? Agar Batman have, oh my god, Batman and easy. Down A. This time they made no mistake. This is the round which Medal Esports needed. इस बार का पुश बहुत सही हुआ क्योंकि साथ में खेल रहे थे. यही रिक्वायर्ड था. वो साथ में खेलना इज रिक्वायर्ड. वो बैकअप देना इज रिक्वायर्ड, जो कि पिछले कुछ राउंड्स में नहीं दिखा था. फाइनली वो सिंक दिख रहा है. फाइनली वो बात हो रहा है. And finally they are connecting their shots as well. बिल्कुल. और आई मीन एक यही चीज जो मेडल ई स्पोर्ट्स कर रही थी आरओजी के साथ इन द मैप ऑफ ब्रीज की उनको स्पेस नहीं दे रही थी टू रोम अराउंड. उनको उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए हुए थे. इन लास्ट राउंड में हमने वही देखा. उन्होंने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया एंड आरओजी एकेडमी सीम टू हैव बीन crushed against that. But let's see, Tricky gets a kill on Levi so early. Levi has been was a very crucial kill for the team. Panzer, though, he gets his spot. He Almost is out. going to put that spike down now. Right, Jester with his overdrive takes 2 kills. Come on. But there we have the Rolling Thunder coming in. Fox should be taking. Oh my! No. Oh my Almost. god! One enemy. Easy Rules gets caught. Vexy Panzer will be taking the Tricky down. Night Jester, he knows for the fact that he has done substantial damage on Fox and will be putting his life to end here as well. That was beautiful. As I mean, जो smoke के through उन्होंने वो connect किया, like how was that happening? I mean, you can take that risk with a neon ultimate, Manasvi, and आप सबको पता है, मुझे हमें भी पता है कि neon अपने बोल्ड प्लेस के लिए जाने जाते हैं. एंड दैट वाज बॉल्सी, राइट? लास्ट टाइम हमने ट्रिकी को देखा था कि ही कनेक्टेड दोस ऑपरेटर शॉट्स जहां पे प्लेयर्स मौजूद थे, स्मोक्ड आउट थे. वो स्मोक के थ्रू ऐसे आगे जाना ऑलवेज इज डिफिकल्ट, बट आपको ये डिफिकल्ट प्लेस बनाने पड़ेंगे ताकि आप राउंड सिक्योर कर सकें. एंड ओपोनेंट्स तभी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे. रूल्स एंड आरओजी एकेडमी के प्लेयर्स इस बार स्लो खेल रहे हैं. दे नो इट कि मेडल ई स्पोर्ट्स को थोड़ा सा उनको रीड करने नहीं देना. लुक एट ट्रिकी. ट्रिकी इज प्लेइंग अ वेरी डिफिकल्ट एंगल. फ्लैश आया और दे नो बहुत सारे. ओह माय गॉड, ट्रिकी स्टिल कनेक्ट्स दैट शॉट. ओके, 4 प्लेयर्स, लिटरली 4 प्लेयर्स आर्केड साइड पे कंटेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम आरओजी साइड. ये इंफॉर्मेशन ट्रिकी को पता लग चुका है एंड दैट इज व्हाई बैकअप है उनके साथ. ओह नो ट्रिकी, नो ट्रिकी, नो ट्रिकी, what ट्रिकी? ओह माय गॉड, ट्रिकी still connects that shot and he gets the fourth one. Oh my god! Tricky wants Tricky, to what end it. he's been wanting since forever. It's happening for him. Is he going to get that? Is the question now, because we have DC Rules. Oh my god, Oh, DC what? Rules! No, the match is still not over. The round is still not over. He gets that 3k now. Vexy and both of these guys have to be very careful. And they end the round with that kill on DC Rules. That was amazing. I mean, everybody was expecting a ace for Tricky, but then DC Rules is like, no, I'm putting a stop to this. He gets 3k in line. That were, I was like, okay, is this the turntables? But nope, Fox was like, no, we are not making that mistake again. We have seen Levi take that ace. We're not letting this happen again. And they finally score that map for themselves. So it's a 2-0 for Medal Esports indeed. But
huge props to both the teams, especially ROG Academy. Every round was pretty close. They did make a good comeback, but Middle East was just proving themselves worthy to be in the grand finale that is to happen tomorrow. आई मीन मनस्वी, रोलिंग थंडर खा के भी अगर आप ऐसे शॉट्स कनेक्ट कर देते हैं तो फिर हैट्स ऑफ, बिग प्रॉप्स टू मेडल स्पोर्ट्स की उन्होंने 2-0 की स्कोर लाइन के साथ ग्रैंड फाइनल्स में एंट्री बना ली है। बट अभी के लिए हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के उस पर आपके लिए स्कोर बोर्ड एंड ग्रैंड फिनाले में क्या मैचअप होने वाला है वो भी रिवील कर देंगे। Welcome back, ladies and gentlemen. We just witnessed the ROG Showdown Series Valorant League, the semifinals number 2, where we saw ROG Academy go head to head against Middle Esports. But Middle Esports ने 2-0 के स्कोर से अपने लिए जगह बना ली है ग्रैंड फिनाले में, जो कि है कल. So, Oro, that was an interesting game. Even though Middle Esports did win with a score line of 2-0, do you think that was a close call? Because in every game, actually, in both the first map, a breeze, and second map, a fracture, we did see ROG coming out strong in the second half.
आई मीन क्लोज तो नहीं कह सकते हैं कि स्कोर लाइन कुछ और पोर्ट्रे कर रहा है। क्लोज आई मीन क्लोज तब हो जाता जब या अगर ओटी या फिर 11-13 के स्कोर के साथ एंड अप करता। सो इट वाज नॉट क्लोज। कुछ राउंड्स में इट वाज क्लोज ये कह सकते हैं। एंड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आरुचि एकेडमी के प्लेयर्स में, ये हम जरूर से कह सकते हैं। बट द होल बेस्ट ऑफ 3 सीरीज में इतना कहूंगा कि आरुचि डिडंट हैव एनी क्लू कि मेडल क्या कर रहे थे, स्पेशली इन देयर डिफेंडिंग साइड इन दिस मैप। मनस्वी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्लेयर्स को इतना स्पेस क्यों दिया गया कि उनके 3-3 प्लेयर्स स्पॉन से भाग रहे हैं लिटरली। लाइक मतलब अगर आप डिफेंसिव साइड पे हैं, डिफेंसिव साइड पे 3-3 प्लेयर भाग के वो साइड कंट्रोल लेके प्लांट कर रहे हैं। और क्योंकि उनको इतना टाइम मिल रहा था मनस्वी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब आपके पास टाइम होता है, अब आप अपना मनचाहा प्लांट कर सकते हैं, आप प्लेस कर सकते हैं। इतना ओपन प्लांट अगर है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे यूटिलिटीज एंड बॉडी डालने पड़ेंगे आरओजी के प्लेयर्स को टू डिफ्यूज दैट स्पाइक। एंड वो चीज नहीं कर पा रहे थे या फिर रोक पा रहे थे। अगर उनको प्रेशर क्रिएट करते तो शायद से उनको बैक साइड प्लान करना पड़ता, राइट? थोड़ा सा कुछ हो सकता था। बिल्कुल, आई मीन यू कंप्लीटली, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। इनफैक्ट वी हैव सीन कि जो हम्म। मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स है उन्होंने पहली मैप में भी यही किया था कि काफी ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था। एंड यू नो, व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द होल गेम प्ले, लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली वेंट डाउन। या एंड आई थिंक स्कोर कार्ड बहुत क्लियरली यहाँ पे कुछ चीज़ों को पोर्ट्रे कर देगा। बट अगर आप लोगों ने मैच मिस किया है फिर आप शायद प्रॉपर स्टोरी तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बहुत राउंड्स में बहुत अच्छा करा है आरुचि एकेडमी ने एंड पोटेंशियल शो किया है। क्योंकि जब फर्स्ट हाफ हुआ था तब द स्कोर लाइन वाज 9-3 एंड देन मेकिंग अ कमबैक। एक एक टाइम ऐसा था कि एक भी राउंड अटैकिंग हाफ में नहीं दे रहे थे मेडल को, बट मेडल पुल्ड इट ऑफ। वो एक्सपीरियंस वहां पे शोकेस किया एंड ट्रिकी। वो लास्ट राउंड में तो कुछ और ही कर दिया उन्होंने। आई डोंट नो व्हाट ही डिड बट ही डिड समथिंग जो कि सब के आंखों में लगा। एंड ये ऐसा ही परफॉर्मेंस उनको कल पुल ऑफ करना पड़ेगा बिकॉज टुमारो इज अ ग्रैंड फाइनल्स। बट अभी के लिए फॉर मी ट्रिकी वाज द एमवीपी इन दिस मैच एंड ही इज। Definitely, but let's not forget about DC rules. He was actually both his players pretty close. Tricky had 22 kills and DC rules had 21 kills, so pretty close. But at the end of the day, what matters is the how the whole team performed together. जहाँ पे Middle East Sports definitely बहुत ही ऊपर उभर के आई, and they showed कि yep, we are the better team and we deserve our spot in the grand finale. सो हम कल देखने वाले हैं ग्रैंड फिनाले में चिलकॉड अगेंस्ट मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअल plays that if each of these players made. We saw Panzer being very impactful, Levi being very impactful, even Vortex God did pull off a lot of rounds for his teammates. But somewhere see, like you said कि potential बहुत ज्यादा है आरजी एकेडमी के प्लेयर्स में Yeah. individually, but now what they need to learn or do is play use those kind of plays with the team and play as a team, because I think that is where we they were lacking. जैसे आपने बोला कि उन्होंने ऑलरेडी एक बार ब्रीज में देखा था कि मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, बट इजीली साइट में एंटर कर लेती है, एंड दे जस्ट देन इट्स जस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेक अ रीटेक. So, yeah, let's have a look at the overall scoreboard as well and see how the whole day looked like. एग्जैक्टली, आई थिंक ओवरऑल स्कोरबोर्ड में भी देयर वोंट बी मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि दोनों मैचों में इट वाज वन साइड शो तो नहीं बोलूंगा, बट इट वाज अ मेडली स्पोर्ट शो जहां पे 2-0 विक्ट्री यहां पे उन्होंने हासिल किया है। एंड ट्रिकी ऑफ कोर्स ही डिजर्व्ड दिस एमवीपी, ही गॉट इट इन हिज बैग। एंड बहुत अच्छा खेला है, उनकी टीम को उन्होंने बहुत अच्छे एंट्रीज दिलाए हैं जो कि रिक्वायर्ड है एज अ डुएलिस्ट। आपने ब्रीज के मैप में भी देखा था कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेटर के साथ शॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर दिए थे। एंड एक बार वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है ना, फिर देयर इज नो स्टॉपिंग। एंड वही चीज हुआ। आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने मिड कंट्रोल लिया इन दैट मैप ऑफ ब्रीज, उसके बाद कमिंग ऑन टू दैट नियॉन, बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म कर दिया आरुचि एकेडमी के प्लेयर्स को। एंड उन्हें ब्लॉक ऑफ नहीं कर पाया। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी हैंड, पैंजर, उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश करी फ्रॉम हिज टीम, ही गेट्स द एमवीपी देयर। बट देयर इज अ लॉट टू लर्न फॉर आरुचि एकेडमी, लॉट ऑफ पोटेंशियल, जैसे कि मैंने कहा।
तो वो सीख रहे हैं, जैसा कि मैंने कल के दिन में भी कहा था कि यहाँ पे टीम हारते नहीं, वो सीख के जाते हैं, तो बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं इस सिचुएशन से। We'll see them around, but Metal Esports, congratulations to you guys. You guys have qualified for ROG Showdown Series के Grand Finals, which is being brought to you by ASUS, ROG and Intel. बिल्कुल congratulations to all the players who made it so far and all the best to both the teams Chilcot and Metal Esports who are going to be facing off each other tomorrow in the grand finale of this ROG's Showdown Series Valorant League. I am very excited to see this match happen. Always very excited, Yeah. and let's just see what happens tomorrow. This was it from our side for today. We'll sign off with this and see you guys tomorrow. Make sure you're there to watch this show go down. One enemy remaining.